मिस्टर गाउंडर, कैसे हैं आप? अच्छा है भाई। हम लोग के एक ब्रीफ डिस्कशन रहा ऑफ कैमरा एंड आप एक्सप्लेन करा आपके पार्टी के बारे में एंड बट बिफोर हम लोग उसमें जाएगा, हम मन तो जाने आपके बारे में। आप कहाँ से स्टार्टअप कर? ढेर जन आपके जाने हैं, आप बिजनेसमैन हैं, बट बिफोर बिकमिंग अ बिजनेसमैन आप कौन सी करता रहा? अच्छा, हमारा वैसे नाम है कृष्णा गाउंडर और पीपल हमें विशाल गाउंडर थ्रू सोशल मीडिया जाने और कॉमन नेम है हमारा अराउंड द कमिटीज पीपल हमें विशाल गाउंडर से जाने हैं। और हम बोनो या बा में और ग्रोप या लटोका में, प्राइमरी और हाई स्कूल लटोका में करा। फिर हम या 2001 में हम तावा चल जा रहा फैमिली के संगे। खाली हम फॉर्म 7 तावा में रह के करा। उसके बाद में फिर हम वो टाइम काफ़ी हार्डशिप रहा। अभी रकम उतना सपोर्ट नहीं रहा स्टूडेंट्स लोग के। तो आई वाज बोर्न इन अ family where we have like four of us were going to school, my two sisters and including my brother. तो हमें बहुत मेहनत करे पड़ा बिकॉज पढ़े के उस दिन हमें अपने आप कोशिश करे पड़ा। जहाँ पे हम ट्राई करा है फॉर्म 7 के बाद में एक आध फैमिली फ्रेंड्स लोगों के फार्म में काम करो जस्ट टू सपोर्ट माई एजुकेशन फेदा एजुकेशन के लिए। तो हम काम करा, खेत में काम करा, शुगर इंडस्ट्री, गन्ना काटा, गन्ना बोया, फार्मिंग करा। अबाउट 3 years तक वो करा। फिर हम पढ़ते रहा। पढ़ के हम अपन टेस्ट स्कूल जाके सुबह में करा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। और फिर हम ज्वाइन करा एक इंजीनियरिंग फर्म में। सो बेसिकली हम स्टार्ट करा लेबा से स्टार्ट करा। फिर वहाँ से हम सब रैंक जैसे इंजीनियरिंग में रहे हैं, लेबा से ट्रेड असिस्टेंट, फिर सेमी ट्रेडमैन, सीनियर ट्रेडमैन, फिर फ्लॉसवाइजा, फिर से करते करते हम लास्ट सेल्स मैनेजर काफ़ी ईयर्स तक करा नागन इंजीनियरिंग में, एलिशा इंजीनियरिंग में और नैनी के कंपनी में काम करा। तो काम करा सेल्स मैनेजर में। एडवांटेज हमें कौन सी वगैरह आज हम बिजनेसमैन है थ्रू कॉन्टेक्ट और हमारा रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। और हमें अच्छा लगा जो हम ट्रेड चुना रहा और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हमें काफ़ी एक्सपीरियंस करी से काफ़ी सेक्टर्स में, लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर में, मरीन टाइम में और कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग में। और फिर काफ़ी एक्सपीरियंस गेन करा हमें लगे हम काफ़ी डिफरेंट सेक्टर्स में। और अभी तो फ़िलहाल हम एक बिजनेसमैन है और हमारा कंपनी इंजीनियरिंग और सिविल बिल्डिंग साइड है। यही बस अभी फ़िलहाल बिजनेस में है। तो आप फार्मिंग बैकग्राउंड से स्टार्ट करा है एंड गया है एज अ सेल्समैन एंड देन बिजनेस। क्या पॉलिटिक्स, आउट ऑफ एवरीथिंग पॉलिटिक्स सबसे डिफिकल्ट, सबसे कंफ्यूजिंग स्पेस है। तो क्या आप चूज करा एक डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंज परस्यू करेंगे? This message is shared in support of Fiji Cancer Society. Behind every cancer diagnosis in Fiji is a family fighting for hope. Your donations will help provide transport to treatment, care packs for patients, and support and comfort for caregivers. Together, we can turn compassion into action because your support is the lifeline they need. So whether you'd like to register, support, participate, get screened, or volunteer, the Fiji Cancer Society would love to hear from you. You can contact them on 332-4960 or 998-6981. That's 332-4960 or 998-6981. You can also visit their website at www.fijicancer.com.fj. Follow them on Facebook at Fiji Cancer Society
or on Instagram, Fiji Cancer Society 20. The Fiji Cancer Society is open Monday to Thursday from 8:30 a.m. to 4:30 p.m. and Friday from 8:30 a.m. to 4 p.m. Together, we can make a difference in the lives of those affected by cancer across Fiji. Now back to the episode. वेरी गुड क्वेश्चन. पहले तो हम बते हम एक ऐसा पेशेंट रहा जो अपने आप के बहुत रिजर्व रखा रहा और हमें पॉलिटिक्स से कोई रकम से कनेक्शन नहीं रहा. हमारा फैमिली भी कोई कनेक्टेड नहीं रहा. हमारा नियरेस्ट फ्रेंड लोग कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है इस रहा. और हम अपने आप बैठ के सोचता है कि हाउ कम हम स्टेप लिया रहा. बट आई थिंक दैट स्टेप वाज very much needed रहा. पॉलिटिक्स जाए के लिए कोई प्लान नहीं रहा, कोई एडवाइस नहीं रहा. इट वाज जस्ट कि हम तावा में आई सिट इन लॉट ऑफ बोर्ड्स, लॉट ऑफ NGOs और काफ़ी चीज़ में हम इन्वॉल्व है. अगर आप स्पोर्ट्स देखो, पीपल लिविंग विद डिसेबिलिटीज देखो और हॉस्पिटल के बोर्ड देखो, कॉर्पोरेट क्लब्स देखो, यूथ क्लब देखो, तो काफी बिग एरिया में हम तावा में कवर करता ऑलमोस्ट. तो एक रोज ऐसे भी कि ग्रुप ऑफ पीपल इनवाइट करी सुरा टू स्टार्ट समथिंग फॉर द लेडीज लोगों के लिए कुछ करे के. बिकॉज तावा में सोका और रग्बी होए, बट लेडीज और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए कुछ नहीं रहा. तो सिंस हम डेयर बोर्ड में रहा तो काफ़ी बोर्ड मेंबर्स लोगन और डिफरेंट फील्ड में रहा या NGOs में रहा. तो हमारा काम देखी से कौन वैसे हम जितना बोर्ड्स लोन में जितना NGOs में काम करता तो लोग काफ़ी इंप्रेस रहा. तो हमें इनवाइट करी रहा फॉर तावा नेटबॉल, टू रिवाइव तावा नेटबॉल. तो हम लोग मीटिंग ला तावा विलेज में भी. तो तावा के काफ़ी prominent people लोगन भी, as far as civil servant लोगन और तुरंगा लोगन जो विलेज के हेड लोगन सब रहा. I was the only Indo-Fijian जो इनवाइट बे रहा कि आओ तावा नेटबॉल के रिवाइव करो ना. बिकॉज तावा नेटबॉल इज डूइंग गुड इन सेकेंडरी स्कूल लेवल तक जीते तावा कॉलेज. और उन्होंने ट्राई करी सरा कि कुछ ऐसे करो कि लेडीज और ट्रांसजेंडर्स के लिए कुछ हो जाए ना. तो हम कैजुअली गया मीटिंग बे. हमें ट्रस्टी अपॉइंट हुआ तावा नेटबॉल के. देन वी स्टार्ट प्लान करेंगे ना कि कैसे यहाँ से आगे हम लोग चलेगा, फाइनेंशियल स्टेटस और वट एवर, यहाँ से हम उनके मिल के कैसे सबके संगे लाए के नेटबॉल के रिवाइव कराए के. तो आई रिमेम्बर आई वॉज होल्डिंग, हम फिजी टाइम्स पढ़ा था और फिजी टाइम्स में वो टाइम हम न्यूज़ पढ़ा था कि फिजी रग्बी के कुछ 3 मिलियन कुछ डोनेशन दी सरा. और यहाँ नेटबॉल मीटिंग हुई के तो बजट होगी कि वेस्टर्न रेली टीम लोन जाए अंडर 20 और मेन तो उतना तो पैसा मांगे. देन दिस पीपल स्टार्ट टू कॉल सम प्रोमिनेंट बिजनेस पीपल, सबके कॉल करे लगा, मतलब तकीना तुरंगी करो लोन की कॉल करो ना कि सपोर्ट करी. सो द फीडबैक वाज नॉट वेरी पॉजिटिव. सबके अपन एक्सक्यूज रहा कि हार्ड टाइम है या नहीं कर पाएगा. तो कोई रकम से कोई सपोर्ट नहीं आता था. तो हम कैजुअली खाली बोल दिया इन ग्रुप, देयर वाज 15 to 20 पीपल. हम खाली कैजुअली बोल दिया कि हम लोग जो बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी गोल्डमाइन फिजोटा का हम लोग अप्रोच करो कि कुछ डोनेशन आ जाए ना. कुछ हम फिजी टाइम से पढ़ा था डोनेशन देवे ना. तो उसमें से कोई बोले दे वोंट लिसन टू अस. तो हम बोला व्हाई दे गिव डोनेशन. तो हम बोले दे ओनली गिव टू गवर्नमेंट and they listen to government ministers. I'm like, no, that's not right. We at least approach. ना हम approach करो. But वही में बात चलते then somehow this topic came that we should have one of our representative from Tawa. और काफी बात होने लगा रहा कि तावा के रिप्रेजेंटेटिव रहे मांगे. It's been long 35 years हो गए. मैं लगे तावा सोका नहीं जीती, रग्बी is not doing good. ढेर स्पोर्ट्स और ढेर फील्ड में जहाँ हम लोग भी जिसमें सेव करता है बहुत कीमती सपोर्ट है. तो हम वही कैजुअली बात होते कि वन ऑफ अस शुड बी देयर टू
listen to the voice of people of Tabwa, and without like expecting everyone हमें you the one और हम एक Indo-Fijian रहा और सब आए तो किसके बीच में मतलब you will be the best person to go in politics for us because उतना 20-25 years से हम लोगों के संगे है social सर्विस में तो उचित देख के लोग बोलिस तो हम नहीं दन हाँ बोल दिया बोला इट्स अ गुड आइडिया लेट मी थिंक ना तो हम लोग वहाँ से ब्रेक ऑफ पे हम लोग चल दिया हम वाइफ से डिस्कस करा देन वाइफ के बोला कि आई थिंक आई शुड मेक अ ट्राई बिकॉज अगर देखा जाए खाली स्पोर्ट्स के बात नहीं है काफ़ी इश्यूज है ना हम लोग टाउन ताबुआ काफ़ी पे करे नेशनल रिसोर्सेस के लाइक इनकम जीडीपी में मजे जावे लाइक गोल्ड ओटा सीनो हाइड्रो पावरफुल ना तो काफ़ी पैसा ताबुआ से नेशनल इकोनॉमी के लिए जावे है बट रिटर्न्स कुछ नहीं रहे तो वाइफ बोला हम भी बिजनेस में है और देखा जाए तो यहाँ कुछ डेवलपमेंट भी नहीं हुए ताबुआ में तो देयर एरियाज सोचा वाइफ के हमला लेट मी टेक अ चांस कि लेट्स गो इन वॉइस फॉर पीपल ऑफ ताबुआ एंड bring all these essential service or whatever we can do प्लस हमला यही टाइम हमें अपने आप के भी टेस्ट करने का मौका मिल जाए so I've been helping and giving my support to different organization from years a decade 25 years और कभी कोई लाइफ में तो अपने आप के टेस्ट करो इज द पीपल आपकी यूज करे कि पीपल तुम्हें रेस्पेक्ट करे so maybe टाइम अगर हम पॉलिटिक्स में गया and if people support me it shows that things I've been doing from years it's coming back तो वो एक हमारा रीजन रहा कि हम पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट दे दिया रहा एंड देन वहाँ से आप फॉर्म करा है नेक्स्ट जेन अलायंस पार्टी एंड आई बिलीव उसमें भी थोड़ा डिस्प्यूट रहा इनिशियली रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफिशियली आई थिंक रजिस्टर हो गया बिफोर नेक्स्ट जेन हम सिंस हम ताबुआ में बा प्रोविंस है बा प्रोविंस बोए और इन अनदर पार्टी ना हाँ बा प्रोविंस तो हम लोग के पीपल बा प्रोविंस से दे हैव कनेक्शन विथ लेट आंदी सेविया गोरो द प्रेसिडेंट फॉर यूनिटी फिजी सो फ्यू पीपल टुक मी टू यूनिटी फिजी कि try with यूनिटी फिजी try with a new party because people all have सबके अपन डिफरेंट रकम के सोच रहा ना और हमारा वही चित्र हम इला देखता है जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो ढेर सी सोशल मीडिया में आप देखता है तो हम सोचा रहा कि हम बनता है लचित कट ऑफ करें बिकॉज हम अपने आप फील करा कि हम जहाँ पे रहता है हमारा जो सराउंडिंग है आई बीन लिविंग विथ ऑल डिफरेंट रेस एंड रिलीजन तो हमें लगी से कि हम एक पेशेंट रहेगा जो ट्राई करेगा आइतो की पार्टी में जाए के एक अच्छा इमेज देगा इंडिजिनस पीपल की एक इंडो-फिजियन भी जो चिलों एक्सपेक्ट करे वो रकम से काम करे तो वही चीज़ हम सोच के हम यूनिटी फिजी बिकॉज उसके हम जनता मेंबर्स लोन लाइक इंडिजिनस पीपल रहा तो हम यूनिटी फिजी गया राहुल के संगे कुछ दिन और एक AGM पे ताबुआ में फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ताबुआ में AGM और हमें वहाँ पे इलेक्ट करी सा बोर्ड मेंबर हम और नोलिंग सिस्टर नोलिंग बिलिंग्स दोनों के नाम आई सरा यूनिटी फिजी में और हम एक लेपन CV सबके देख रहा ईमेल है फ़ोन में अभी भी GS हमें मांगी सर सब चीप बट उससे पहले हम निकल गया था उनसे उनके पार्टी से आप आगे चल के पूछे मंगना रीज़न आई विल गिव द रीज़न क्या है निकला तो वहाँ से जब हम निकला तब पीपल ने हमें अप्रोच करी सा ग्रुप ऑफ पीपल क्या नहीं तुम पीपल्स अलायंस ज्वाइन करो बिकॉज उभी आए तो किलेट पार्टी एंड सम अप्रोच मी टू सोडल्पा बट कुछ वगैरह पीपल्स अलायंस के रिप्रेजेंटेटिव ताबुआ मेरा तो दे टुक मी टू पीपल्स अलायंस तो पीपल्स अलायंस हम गया उन लोगों के संगे रहा प्राइम मिनिस्टर्स बात दे सबसे बात दे काफ़ी मिनिस्टर उनसे और एक्साइटेड रहा कि जे लोगों के संगे सिंस दे आर इन पावर डिस्कस करी कि कौन सी सेक्टर ताबुआ के संगे उन लोगों के सपोर्ट कौन सी ताबुआ इंस्टेड ऑफ हम जाके 27 इलेक्शन में जाए के वेट करी ताबुआ के हेल्प आए बदली हम अंतर वही टाइम लोगों के संगे कनेक्ट हो जाए कि ताबुआ के अभी से कुछ सपोर्ट मिलने लगी बट आई थिंक समवेयर इन द मिडल दिस यूथ थिंग केम सो हमने मतलब बताया कहाँ के यूथ लोगों ने आई सरा
बट आई वाज द फर्स्ट पर्सन जो लोन हमें अप्रोच करीस हमें काफ़ी पार्टी लोन अप्रोच करीस काफ़ी पॉलिटिकल पार्टी अप्रोच करीस काफ़ी पॉलिटिकल लीडर्स लोग भी अप्रोच करीस बट यूथ लोगन आए हमसे बात करीस देखो बोले हम लोग फ्यू इलेक्शन देखा जाए यूथ लोगन के इंटरेस्ट जाए लगा ना पॉलिटिक्स से वोट भी देखो काफ़ी बिग परसेंटेज यूथ लोग मिसिंग है तो कहने बोले यूथ लोग पार्टी फॉर्म करो तो हम उतना ईजी नहीं है ना बोले वी ट्राई तो हम लोग यूथ लोन आई से ढेर जगह के मल्टी रेशियल लाइक पीपल रतुमन लोन आई से आइतोकीज आई से इंडो-फिजियन आई से यूरोपियन आई से राम्बी पीपल आई से ऑल डिफरेंट पीपल केम वो नाइस कि चलो हम लोग एक यूथ पार्टी फॉर्म करो हम लोग ट्राई करो बैलेंस करो मेल फीमेल और प्लस 80% ट्राई करो यूथ लोन रखो और प्लस 20% हम लोग कुछ सीनियर लोगों के रखो जिनसे हम लोग गाइड करें सो ये रकम से बाद में और हम लोग सबको मिला डिस्कस करा कि राइट चलो तो अब नाम पहला नाम पे बाद में इला चीज हम मनता बतावे स्पेशली हम इंडो-फिजियन कमेटी के नेक्स्ट जेन अलायंस उसके मतलब पहले बताई दी कि कैसे नेक्स्ट अलायंस पे और फिर हम आपके जो क्वेश्चन रहा कैसे रिजेक्ट पे उला भी बताए नेक्स्ट जेन अलायंस के मतलब है नेक्स्ट जेन के बेसिकली मतलब है नेक्स्ट जनरेशन कि हम लोग मनता एक फाउंडेशन सेटअप करे फ्यूचर यूथ्स के लिए कि हम लोग के बाद भी जो अपकमिंग यूथ्स रही दैट्स व्हाट वी मीन बाय नेक्स्ट जनरेशन कि एवरी जनरेशन दैट कम अप हम लोग के एज अ नेक्स्ट जनरेशन दे विल टेक लीडरशिप तो दैट इज मीनिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन अब उसके बाद में हम लोग के बात ऐसा रहा कि द पार्टी द मेन जो हम लोग के द वर्ड वी हैव टू यूज तो हम लोग काफ़ी रिसर्च करा ऑल ऑफ अस कि हम लोग रिसर्च करा हम लोग अपन आइडियाज शेयर करा कि हम लोग कौन सी मनता जैसे हम लोग के आइडियाज रहा कि कैसे कैसे इंडिपेंडेंट हुए के बाद में 1970 में कैसे कैसे हाउ फिजी वेंट फ्रॉम देयर 1970 ना बिकॉज आप अगर 1970 से देखो बाय 1987 जब coup नहीं बह रहा देवर लाइक काफ़ी डेवलपमेंट बह रहा और पीपल में उतना डिफरेंसेस नहीं रहा तो अभी हम लोग वही चीज ट्राई करा कि चलो 1970 में फाइंड आउट करो कि उन लोगों के आइडियोलॉजी कौन सी रहा उन लोगों के प्रिंसिपल कौन सी रहा लाइक मिस्टर रातू मारा उटेम काफ़ी प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन रहा जैसे मिस्टर जयराम रेड्डी मिस्टर महेंद्र चौधरी मिस्टर आई डी पटेल मिस्टर कोया मिस्टर तिमोदी बाबांड्रा late मिस्टर तिमोदी बाबांड्रा लाइक मिस्टर रातू मारा वेरी प्रोमिनेंट पीपल तो उन लोगों के आइडियोलॉजी कौन सी रहा हम लोग उसमें जाके सर्च करा तो हमने 1970 सर्च करा तो फर्स्ट पता लगा कि अलायंस पार्टी रहा टाइम तो उन लोगों के काफ़ी आइडियोलॉजी और काफ़ी जो उन लोगों के विजन रहा हम लोग के अच्छा लगा जैसे कि उन लोगों के रहा रेशियल इंटीग्रेशन क्रॉस कल्चरल कोलिजन रूरल डेवलपमेंट और फिर उन लोगों के मल्टीरेशनलिज्म रहा और फिर ट्रेडिशनल लैंड ओनर्स के लीडरशिप में काफ़ी चीज़ जो सी हम सोचता है व्हाट हम लोग रिक्वायर करता है फॉर जनरल यूनिटी तो वो आइडियोलॉजी वो अलायंस में रहा जब 1970 में फॉर्म पे तो हम लोग वही के कारण वो अलायंस लाया कि नेक्स्ट जेन अलायंस वी गो टू 1970 जो माइंडसेट से वो लोग स्टार्ट करें रहा जो पॉजिटिव नोट से स्टार्ट करे जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंट हम लोग वही नोट पे हम लोग भी स्टार्ट करो हाउ वी कैन ब्रिंग ना सबके हम लोग कैसे संगे लाएगा तो अलायंस इज दैट नेक्स्ट जेन अलायंस पार्टी तो हम लोग के 1970 के जो उस सब कॉन्सेप्ट रहा जो आइडियाज रहा उन लोगों के विजन रहा उसके हम लोग देख के हम लोग अलायंस वोट दिया तो ये है नेक्स्ट जेन अलायंस पार्टी अब बात आवे जैसे कोई कुछ रूमा है कि वो अलायंस वोट है तो करंट गवर्नमेंट जो पीपल्स अलायंस है मिस्टर सिटी रंबू का उसके लेके नहीं हम लोग ने कोई रकम के कोलिशन नहीं है कोई रकम के हम लोग शेयर नहीं करता कुछ हम लोग एक्चुअली स्टार्टिंग में हम लोग जब यूथ लोन लाइक कोई बिजनेस हम लोग के कोई स्पॉन्सर नहीं रहा हम लोग जब बोटरा 8,000 सिग्नेचर्स लाइक 4 or 5 पीपल हम लोग बोटरा वेरी शॉर्ट टाइम में थैंक्स टू एवरीवन हम लोग 8,000 बोटरा रहा और हम लोग रजिस्टर करा रहा 5,000 भर के तो ऑब्जेक्ट भी पहला आइस रहा पीपल्स अलायंस के बगल से उन लोग ऑब्जेक्ट करीस रहा हम लोग के एंड दैट ऑब्जेक्ट एक्चुअली दे वॉन तो हम लोग के फिर से जीरो से स्टार्ट करे पड़ा फिर से हम जीरो सिग्नेचर से स्टार्ट करा फिर से 5,000 पैसा फिर बोट रहा फिर से हम लोग रजिस्टर करा
तो वही चीज़ हम लोग मनता बताया जितना जब हम लोग फेसबुक में देखे कि कंफ्यूज नहीं होना, नेक्स्ट जन अलायंस सिंस अलायंस वोट है, तुम लोग उचित नहीं समझ लेना कि हम लोग कोई रकम से ई करंट गवर्नमेंट के जो लीडिंग पार्टी है उसके संगे नहीं नहीं नहीं, नहीं हम लोग संगे नहीं है। हम लोग एक्चुअली हम लोग के काफ़ी हार्ड टाइम लगा रहा जब ऑब्जेक्ट दे रहा, फिर से पैसा बोटो, फिर से सिग्नेचर बोटो, ईजी नहीं रहे, फिर से जाके पीपल के एक्सप्लेन करो, आप अगर कोई के सिग्नेचर ले जाता है तो बेसिकली आपके बारे में जाने मांगे लोग, आपके पार्टी के बारे में जाने मांगे कौन कौन है। और कभी कभी हम लोग निकलता है अपन व्हीकल में, हम लोग निकलता जाता है सिग्नेचर बोटर की आज हम लोग के टारगेट है कि एटलीस्ट हम 100 सिग्नेचर ले लो भाई। कभी कभी हम लोग के 3-4 आवर्स लग जाए खाली एक दी फैमिली संगे टू रिलेट कि कौन चीज हम लोग सोचता है किसे ना, तो ईजी नहीं रहा। तो वही मतलब बताया हम लोग के जितना फिजी पीपल के कि हम लोग के नाम पे आप लोग नहीं सोचना कि हम कितना टाइम पीरियड है बोला सिग्नेचर्स के अदा करे क्या? बेसिकली रजिस्ट्रेशन के कोई वो सिग्नेचर टाइम फ्रेम नहीं रहे, वो जब तक गवर्नमेंट इलेक्शन रेट नहीं पास करे तब तक एवरी पीपल के लगे टाइम है, तुम चाहे के एफईओ में रजिस्टर करो। वंस गवर्नमेंट वाला रेट दे दी इलेक्शन के तब फिर वहां से रजिस्ट्रेशन सब क्लोज हो जाए। सो बेसिकली तुम पार्टी सकता जस्ट आफ्टर इलेक्शन तुम सकता अपन नवा पार्टी फॉर्म करे लगे। अगर समझ लो 2022 में इलेक्शन बेरा उसके बाद में तुम सकता अगर कोई भी पार्टी तुम सकता, आप तो देखा 30 पार्टीज इंटरेस्टेड रहा फॉर्म करे के, तो हम सोचता उसमें से खाली एक दुई ऑल नेशन और लिबरेशन के भी दिखाया लोग रिजेक्ट पे और पीपल फेस्ट ना कि फिजियन फेस्ट कोई एक आई से, और रेस्ट के तो हम नहीं इशू आए लोन है या नहीं है बिकॉज 30 पार्टी अपन रिजर्व करी इसका नाम। तो इट्स बेसिकली 4 years अगर विद इन उतना टाइम नहीं बे तो 4 years में जब रिट से पहले तुम सकता रजिस्टर कर दे। आई थिंक एक करंट ऑनगोइंग इशू एंड आई बिलीव हम लोग के इंडो-फिजियन कम्युनिटी काफी रिलेट करेगी इस चीज से। And you've been a farmer as well, early on अपना लाइफ में। गन्ना खेती, शुगर केन फार्मिंग, कौन सी इशू है? काय इतना भारी डिस्प्यूट्स लोग है? कौन रीजन से? अभी व्यूअर्स लोग जो नहीं समझे कौन रीजन से इतना भारी डिस्प्यूट है? इसको भाई इला चीज जो ना हमें सवाल करा है, इला चीज हम बेसिकली एक पॉलिटिशियन के नजरिए से नहीं बोलेगा, हम जनरल वे से जो चीज हम आई हैव गॉन थ्रू और जो चीज हम अपन एक्सपीरियंस करा है और प्लस बचा फार्मर्स के संगे कि शुगर इंडस्ट्रीज के लेके। पहला चीज आप अगर शुगर इंडस्ट्रीज के देखो, शुगर इंडस्ट्रीज बहुत कुछ करी से फिजी के, अगर आज फिजी जहाँ भी है थैंक्स टू शुगर इंडस्ट्री, और इवन हम लोग इंडो-फिजियन के भी काफ़ी इमोशन और काफ़ी मेमोरी शुगर इंडस्ट्री से है। बट देन वी हैव टू सी द रियल साइड ऑफ थिंग्स, राइट। अभी देखो जहाँ तक हम जानता है कि पहले हम लोग के शुगर इंडस्ट्री जैसे काफ़ी सपोर्ट मिला था यूरोपियन यूनियन से, बिकॉज हम लोग के लीज वाला इशू नहीं रहा, हम लोग के हार्वेस्टर लोग के इशू नहीं रहा, लाइक काफ़ी इशूज वो टाइम नहीं रहा, राइट। प्लस फैमिली नंबर्स भी जो इन्वॉल्व रहा फार्मिंग में। अभी आप अगर देखेगा कि पहले जनरेशन अगर आप देखो 70s 80s में लाइक एक फैमिली में अबाउट 10 to 12 हेड्स रहा, तो लोग अपने काम करत रहा खेत में, अपने लोग गन्ना काटत रहा और बेसिकली इनकम ना वो टाइम आत रहा। बट वो टाइम वो नंबर्स रे पे भी और जमीन के लीज भी रे से हम लोग के प्रोडक्शन बहुत हाई रहा, गन्ना प्रोडक्शन बहुत हाई रहा, तो हम लोग मीट कर लेता रहा यूरोपियन यूनियन के डिमांड, हम लोग मीट कर लेता रहा। तो हम लोग के जितना लोग मांगत रहा तो हम लोग बेसिकली फिजी सप्लाई कर देता रहा। बट ड्यू टू पॉलिटिकल रीजन और ड्यू टू हमें लगे माइग्रेशन, ड्यू टू लीज एक्सपायरी और प्लस हम लोग के इंडो-फिजियन के बेथ रेट में बहुत बिग डिफरेंस बे। अगर आप 1970 से अगर अभी 2026 में देखो, वो टाइम तो हम लोग के पॉपुलेशन वाज अबव इंडिजिनस पीपल और मैन पावर बहुत ज़्यादा रहा। तो अब वो सब नहीं है और अभी के जनरेशन लोग नहीं मांगे चाहे फार्मिंग करे, तो वो सब रीज़न के कारण कुछ हुए कि सप्लाई में बहुत बिग टाइम रिडक्शन हो गया और हम लोग अब मीट नहीं कर पाता यूरोपियन यूनियन के जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ शुगर। तो उसके कारण यूरोपियन यूनियन को जिक्र आधा
एरियाज में सोर्स करे लगा, अदर कंट्रीज में। हम अभी लेटली पता लगा रहा मॉरिशियस फिजी में आके सीखी प्रोसेस एवरीथिंग दे लर्न फ्रॉम फिजी, और नाउ दे आर बिगर इन फिजी इन सप्लाइंग शुगर। तो अब उरकम से हम लोग के ग्रांट उरकम से सपोर्ट नहीं मिले, और ओवर द ईयर्स से अगर तुम शुगर इंडस्ट्रीज के इकोनॉमिक साइड से देखो, वी आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट। गवर्नमेंट के काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करे पड़े जस्ट टू रिवाइव शुगर इंडस्ट्री, बिकॉज कौन सी 150,000 पीपल डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है शुगर इंडस्ट्री से। तो फॉर एम्प्लॉयमेंट और फॉर कीप दैट इंडस्ट्री अलाइव, गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग लाइक 100 million और मोर अ ईयर फॉर प्रोडक्शन कॉस्ट। आधा गवर्नमेंट के सब्सिडी जो जावे, रिबेट्स लोन ट्रक के फ्यूल के सब मिले है, तो काफ़ी चैलेंजिंग इंडस्ट्री हो गए। तो वही तो बोलता, अगर हम लोग इमोशनल वे से देखो कि हम लोग के आजा लोग सभी शुगर इंडस्ट्री से हम लोग के लेके यहाँ तक पहुँचे से, और एक अटैचमेंट है। इमोशनल साइड से देखो तो हम लोग पॉलिटिशियन के लेके या गवर्नमेंट के लेके काफ़ी डिफरेंट हम लोग के व्यूज हो जावे। बट अगर तुम नेशनल साइड से, इकोनॉमिक साइड से देखो कि हम लोग की शुगर इंडस्ट्री कहाँ लिख जावे, हम लोग के इसके आगे ला जनरेशन रेडी है टेक ओवर करे कि इंडस्ट्री, आर दे इंटरेस्टेड कि वो लोग मांगे काम करे, इज दिस इंडस्ट्री गिविंग प्रॉफिट टू द नेशनल इकोनॉमी। आप तो जानता हम लोग जीडीपी इज लाइक समवेयर अराउंड 3.5 billion, और हम लोग के नेशनल एक्सपेंस इज अराउंड मोर देन $1 billion, से 4.5 billion। सो ऐसा अगर ये रकम से इंडस्ट्री लोगन, सब इंडस्ट्री लोगन मेजर लॉस करे लगी 100-200 millions के, तो हम लोग के दिस विल अफेक्ट इन आधा एरियाज जहाँ पे हम लोग के वेट या टैक्स जिसे हम लोग बोलता है, वो सब चीज़ के गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू ब्रिंग इट डाउन। जैसे भी हम लोग बोलता है फ्यूल के इतना भारी टैक्स हो जाए, इसके टैक्स से ई सौदा के सब चीज़, बिकॉज सबके रीज़न रहे। अगर हम लोग फिजी में कंटिन्यू करेगा वर्किंग विथ लॉसेस, जो चीज़ आप बिजनेस साइड भी देखो कि अगर कोई चीज़ जो लॉस में चले, देन पीपल डोंट कैरी इट, छोड़ देवे, दे ट्राई समथिंग डिफरेंट। सो ये बहुत सेंसिटिव है। आई सपोर्ट फार्मर्स, आई स्टैंड विथ फार्मर्स, आई सपोर्ट फार्मर्स, बट एट द सेम टाइम फार्मर्स के मनता बतावे कि व्हाट इज द फ्यूचर ब्रिंगिंग शुगर इंडस्ट्री। आपके जनरेशन आगे जाके इसमें काम करी, और लुकिंग एट दी शुगर मिल्स के कॉस्ट, जो रकम शुगर मिल्स तुम फिजी में रन हुए, गवर्नमेंट कितना पैसा लगे। हम तो लास्ट टाइम पोस्ट भी करा रहा कि अगर कोई प्राइवेट मांगे के चलावे, इट विल टेक दैट कॉस्ट आउट फ्रॉम गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के जब बोला 100-200 million के लॉस नहीं कवा करे पड़ी, तो गवर्नमेंट उला पैसा से क्या और कोई एरियाज में पीपल के लिए सपोर्ट कर दे। तो इला हमारा शुगर इंडस्ट्री के जनरल में अभी आप देखेगा शुगर इंडस्ट्री के हार्वेस्टर लोग भी खोजना बहुत हार्ड है, बहुत एक्सपेंसिव में आवे, एंड वी हैव लॉस्ट लॉट ऑफ थिंग्स। आई रिमेंबर, आई नो कि रेकी में आई फील सॉरी फॉर आ फादर फैमिली, जहाँ पे उन लोगों के हार्वेस्टर नहीं मिला रहे, दे वेंट आउट, उन लोग जाके हार्वेस्टर नहीं, तस्वीर कहाँ से कहीं से लेके रहा, वो डोटा खोम्फो में पड़ा था, वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, वो प्रीफेक्ट कुछ रहा, वो खाली बस में से उतरी से, और शी वॉज murdered by a person sitting in the bus shelter. People knows that कि वो लड़की बस में उतर के इसे जात रहा अपन घरे, उसके मारी छुड़ी, इसके बापा बेचारा एक बच्चे इस फादक भी छुड़ी लग गया। तो हम लोग काफी लाइक फैमिली डिस्प्यूट बे, जमीन गन्ना के पीछे काफी इश्यूज बे। तो पीपल शुड बी लाइक एकदम श्योर हो, अगर तुम्हें लगे तुम्हारे लगे मेन पावर है और तुम्हारे लगे और लाइफ में और कोई चॉइस नहीं है, खाली गन्ने में डिपेंड है, तुमने सकता और कोई रकम फार्मिंग करे, देन आई विल से यू स्टिक टू इट, राइट। अगर तुम्हारे लगे है रिसोर्सेज है और तुम्हें लगे कि तुम सकता विदाउट हेडेक्स, विदाउट कोई इशू के तुम सकता अपन गन्ना खेती करे, तो हम तो बता करो। बट अगर तुम लोग के लगे कि लेबर शॉर्टेज है, गवर्नमेंट के सपोर्ट नहीं है और बहुत बारी इशू रहे, वेदा गन्ना कटे बहुत रेनी टाइम हो जाएगा नवंबर दिसंबर, अगर उतना भारी इशूज है तो थोड़ा तुम ट्राई करो एक अच्छी दौड़ संगे कैश क्रॉप है या और रकम फार्मिंग ट्राई करो। वही हम फार्मर्स के बताएगा। आपके पहले बताया हम वो रकम से नहीं मनता साउंड करे, अभी हम देखा है जो रकम से काफी पॉलिटिशियन लोगों ने उसके एक मुद्दा बना ली ना कि चलो इसके वो वैसे बात करो कि गेट अटेंशन।
हम जनरल में बताता कि कौन चीज हम लोग के स्टेप लेके फॉर द नेक्स्ट जनरेशन या फ्यूचर जनरेशन कि हाउ स्ट्रॉन्ग वी आर थिंकिंग दैट दिस इंडस्ट्री शुड कंटिन्यू. लेट्स से आज आप पावर में रहता है एंड आपके पास एग्जीक्यूटिव पावर रहता है एंड इशू आए आपके टेबल पे, कौन सी आपके फर्स्ट 3 स्टेप्स रही टू रिजॉल्व दिस? कौन सी आपके ऑन पेपर एग्जीक्यूटिव डिसीजंस कौन सी रही? देखो, पहला तो अभी इशू है फ्यूल क्राइसिस, राइट? फ्यूल क्राइसिस के है इशू है, तो गवर्नमेंट के फर्स्ट स्टेप है कि फार्मर्स के लाइक कार्टरेज के अच्छा कॉस्ट है, तो उसमें बेसिकली थोड़ा हो ही जावे जहाँ पे तुम्हें एक सेट ऑफ पीपल के चूज करे पड़े, बट एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट इज लूजिंग लॉट. तो गवर्नमेंट के जुमारी हम लोग की जुमारी पड़ जाए कि उला एरिया के लिए हेल्प कर दो, जस्ट टू कीप आवर रिलेशनशिप विद द इंटरनेशनल मार्केट ना. बिकॉज अभी अगर हम लोग ट्राई नहीं करेगा सॉल्व करेंगे फार्मर्स और इला इश्यूज तो हम लोग टाइम पे सप्लाई नहीं कर पाएगा अपन सप्लायर के, चाहे यूरोपियन यूनियन चाहे कोई भी है, तो वो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए. तो फर्स्ट स्टेप है लेट्स कम टुगेदर एंड whatever demands are there, let's all come together with a proper negotiation amount. डायरेक्ट बैठ के बात करो. अभी हम लोग देखा है कि एंड कुछ हुए डिस्कशंस हुए अभी करंट एडमिनिस्ट्रेशन? अभी हम लोग गवर्नमेंट के बल से खास अब नहीं कुछ देखा है, बिकॉज कुछ फार्मर्स लोग गन्ना हार्वेस्ट कराए लगा है, वो लोग के हम मिला बात करा है. कोई फार्मर्स के वही चीज है कि वेदर अभी अच्छा है, ड्राई है, गन्ना काट ली, लास्ट में गन्ना के रुक नहीं जावे, बिकॉज लास्ट ईयर काफी गन्ना रुक गया था. तो किसान के दिल में डर भी है कि लास्ट ईयर काफी गन्ना रुक गया और हम डिले करेगा और प्राइस का निगोशिएट नहीं भी है और गन्ना टाइम पे नहीं कटा, नवंबर दिसंबर पानी पकड़ लिया और ज्यादा कॉस्ट हुई, फील्ड से ज्यादा कॉस्ट. फिर हाया करो आधा मशीनरी लाइक लोरी निकालो, कटर्स के फिर ज्यादा और चीज दो, बिकॉज वो रकम से हार्वेस्टिंग नहीं हुई, बिकॉज काफी हार्ड हो जाए ना रेनी सीजन में. तो वही हम सोचता है कि अगर हम लोग रहता, हम लोग ट्राई करता कि वट एवर बेस्ट सोल्यूशन है, लेट्स ऑल कम टुगेदर, जल्दी से सॉल्व कर दो कि हम लोग के जो कस्टमर है ओवरसीज उसके हम लोग टाइम पे अपन चीनी एक्सपोर्ट कर दो. नहीं तो अगर बयान के वो लोग भी चल दी तो वही बात है, फिर पैसा और नहीं आई ये इंडस्ट्री के लिए. एंड आपके कौन सी विजन है? बिकॉज हम लोग जानता है कि थ्रू आउट हिस्ट्री हम लोग के जितना भी coups हुई से इट्स बीन रेशियली मोटिवेटेड, मोस्ट ऑफ द coups हैज बीन रेशियली मोटिवेटेड, एंड उसके कारण से काफी ढेर ड्रिफ्ट हुई से बिटवीन हम लोग के इंडो-फिजियन कम्युनिटी एंड इंडिजिनस इताओके कम्युनिटी. तो आपके विजन कौन सी है जो दोनों कम्युनिटी के कुछ थे? देखो, इसमें मेन चीज है कि अगर आप डिफरेंसेस देखो, पीपल में उतना डिफरेंसेस नहीं है. अगर आप हम लोग के ताबुआ में जाओ, रूरल साइड जाओ, अदर प्लेसेस, उतना डिफरेंसेस डे टू डे लाइफ में उतना डिफरेंसेस नहीं है. बट पॉलिटिक्स बनाई दिसे डिफरेंस लाई दिसे थ्रू पॉलिटिकल डायलॉग्स और डिफरेंट कौन सी होगी. फिजी के मेन प्रॉब्लम जो हम लोग नेक्स्ट जेन अलायंस बनता इम्प्रूव करे कि कोई बात हम हिंदुस्तानी है, आई एम इंडो-फिजियन, आई वोंट गो एंड टॉक अबाउट टेम्पल्स एंड ऑल दोज थिंग्स इन पॉलिटिक्स. इट्स नॉट आई गो एंड हम ऐसे नहीं जाए कि मैं हिंदुस्तानी है, हम एक हिंदुस्तानी समाज में जाए के सब हिंदुस्तानी के प्रति बात करी जस्ट फॉर वोट, या कोई आयतोकी है वो जाएगा अपन आउन डायलॉग में आयतोकी में वोट करे कि वो चल दे. हम लोग वी वांट पीपल हु हैव नेशनल इंटरेस्ट. हम लोग जो नेक्स्ट जन अलायंस जो ग्रुप ऑफ पीपल आया, हम लोग बनता लीडर है फॉर नेशनल इंटरेस्ट, कोई रेस और रिलीजन के नहीं. तो ये ना चीज जैसे सुगा इंडस्ट्री के अगर देख लो तो हम वी ऑलरेडी हम लोग काफी चीफ लोन से काफी लर्नर्स से बात कर लिया है और उन लोग के हम लोग समझाता है यू हैव टू एक्सप्लेन, दे आर वेरी गुड पीपल, उन लोग बहुत अच्छा है. तो मैं के लिए उनको एक्सप्लेन करे पड़ी कि कैसे 20 मिनिस्ट्रीज चले हैं, कितना हम लोग के जीडीपी में पैसा आवे और कितना हम लोग के कर्जा है, कैसे तुम लोग के यू पीपल हैव टू टेक द ओनरशिप. हम डायरेक्ट आई एम टेलिंग स्ट्रेट टू द माय इंडिजिनस पीपल, बिकॉज आई डोंट फियर टू लूज इलेक्शन और एनीथिंग. आई टेल डायरेक्ट, हम लोग के डायरेक्ट बोलता कि तुम लोग के बेथ रेट है 82%. अभी आयतोकी के बेथ रेट इज 82%. तुम लोग की स्कूल पॉपुलेशन इज मोर देन 70%. तुम लोग के पॉपुलेशन जो नेशनल पॉपुलेशन है कंपेयर टू इंडो-फिजियन, यू आर डबल. लाइक हम लोग 30 में हुई, तुम लोग 60s में हुई.
तो आप लोगों के ओनरशिप लेक पड़ी, आप लोग की जुम्मेदारी लेक पड़ी। आप लोग अगर खेती बाड़ी नहीं सकता करे तो आप लोग शेयर फार्मिंग में करो, या हम लोग ट्राई करेगा गवर्नमेंट प्रिजनर्स लोगों के भी आप देखा हो कितना साल से प्रिजनर्स लोग जाए गन्ना काटे, छुड़ी भी ले जाए गन्ना काटे, 2 प्रिजन ऑफिसर एक्ट लगे। मोर देन 20 ईयर्स से हम लोग के एक को कंप्लेन नहीं मिला है, एक को इंसिडेंट नहीं मिला है। तो हम लोग के लिए प्रिजनर गन्ना नहीं बनता कटा है, हम लोग बनता बचा फार्मिंग, कोई रकम फार्मिंग, चाहे दाल हो, चाहे गन्ना खेती, चाहे कोई रकम के फार्मिंग में प्रिजनर लोग के यूज प्रिजनर्स इन वट एवर लैंड इज देयर, यूज लोग के यूज करो। हम लोग के कौन चीज जाके ट्रेनिंग कराई पड़ी, जैसे हम लोग प्रिसेफ कल्चर ना, तो हम लोग के जाए पड़ी इंडिजिनस पीपल के लगे एज अ गवर्नमेंट लीडर्स या एनजीओ जाए के उनके वी नीड टू एक्सप्लेन कि तुम लोग कैसे सकता अपन जमीन यूटिलाइज करे, और उसमें ट्रेनिंग कैसे सकता दे, उन लोग के बैंक अकाउंट कैसे सेटअप करके सकता दे, उन लोग की ऐसे नहीं कि जस्ट फॉर इलेक्शन मशीनरी दे दो या ई हेल्प दे दो और फॉलो नहीं करो और फिर उचित नहीं चले। नहीं, तुम उन लोग के बेटा ट्रेनिंग दो, उन लोग के एक्सप्लेन करो फिजी के इकोनॉमी के बारे में, उन लोग के पॉपुलेशन के बारे में, कि अगर तुम ओनरशिप नहीं लिया था, जो रकम से इंडो-फिजियन माइग्रेट हो, जो रकम से लोग के डेथ रेट इतना कमती हुई है, एक टाइम आई लाइक अनदर 10 ईयर्स में इंडो-फिजियन विल बी लाइक आप लोगों से कोटास भी नीचे चल दी। तो अगर आप लोग ओनरशिप नहीं लिया तो वी आर लूजिंग $1 बिलियन इन एवरी 5 ईयर फॉर फॉरेन वर्कर्स। हम लोग एक रिसर्च करत रहा, हम लोग देखा है एवरी 5 ईयर में अगर हम लोग 10 to 15,000 फॉरेन वर्कर्स के लाता है, वी आर लूजिंग $1 बिलियन फ्रॉम आवर नेशनल इनकम। 1 बिलियन डायरेक्ट चल देवे फिजी से फॉरेन वर्कर्स के एवरी 5 ईयर्स में। तो इला सब चीज हम लोग के एक्सप्लेन करे पड़ी। दिस इज समथिंग जो अभी के पॉलिटिशियन लोग के और लीडर्स लोग के जरूरी है कि दोनों कम्युनिटीज के कैसे इंसेंटिव दो, कैसे बैठ के लोगों से बात करो, कैसे लोगों के अप्रोच करो, कैसे लोगों के लाइक कल्चर वट एवर एरियाज में कैसे जो लोगों के ट्रेडिशनल लीडर्स है, चीफ लोगों ने कैसे लोगों से बात करो कि इला इशू, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट्स अ नेशनल इशू। अगर हम लोग डिफरेंसेस रखा, ये 2 मेजर रेसेस जो फिजियन डिफरेंसेस रखा, हम लोग आगे नहीं जा पाएगा। और हम लोग बताता कि हम लोग एक्सपेक्टेशन और काफी इनपुट इंडियन पीपल के बगल से मांगे टू हेल्प आवर नेशनल इकोनॉमी, बिकॉज पॉपुलेशन वही रकम से है। हम नहीं सोचता कि अभी जो रकम से कोई रकम से हम लोग फिर से पॉपुलेशन वो नंबर्स चल देगा जो हम लोग के आजा पराजा लौन रहा। तो हम लोग के मांगो या नहीं मांगो, हम लोग के ऊपर डिपेंड रेख पड़ी। एंड ऑफ द डे हम लोग मेहनत करता है, हम लोग के 90 to 95% हम लोग के इंडो-फिजियन कम्युनिटी काम करे। हम लोग कब तक काम करेगा? अगर सबको नहीं मिलके काम करी तो हम लोग जितना बोलता है कि ये एरियाज में काफी एक्सपेंसिव है ना, ग्रोसरीज है, फ्यूल है, सबको काम करिए, पैसा आए लगी, सब एरिया में प्रोडक्शन ऊपर जाए, कॉस्ट गिरी। अभी कौन चाहिए सबको अपन 100% देने, फिजिकली मेंटली फिट भी पीपल 100% नहीं, बहुत डिपेंड बढ़ गए, गवर्नमेंट के ऊपर बहुत डिपेंड हो गया। तो गवर्नमेंट अगर पैसा देते रही तो गवर्नमेंट विल बी नेवर एबल टू सेव मनी, गवर्नमेंट पैसा नहीं बचा पाई, और जो गवर्नमेंट नहीं पैसा बचा पाई तो गवर्नमेंट कैश फ्लो के लिए, अपन इकोनॉमी रिवाइव करे के लिए, इकोनॉमी चलाने के लिए उन्होंने दे विल टेक लोन्स, हेवी लोन्स लई, फिर ट्राई करी वेट में या टैक्स में वट एवर एरियाज में ना। अभी फार्मेसी में आप देखो कितना एक्सपेंसिव है मेडिसिन लोन, आप ग्रोसरीज देखो, वट एवर एरियाज देखो, काफी फ्यूल देखो या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस भी जो फिजी आवे कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, वी आर पेइंग लाइक 2-3 टाइम्स मोर। हम रिमेम्बर करता हम ऑस्ट्रेलिया में एक LG टीवी 1200 UD रहा, वही चीज फिजी में 6999, क्लोज टू 7,000, 1,200, उसके अगर तुम टाइम्स 1.4% करो इस 1,680 और समथिंग 1,700 क्लोज हो जाए फिजियन। फिर ऑस्ट्रेलिया तुम टीवी लाया, वही टीवी यहाँ पे 7,000 हो जाए क्लोज टू। तो दिस आर ऑल द फैक्टर्स जहाँ पे हम लोग के रेवेन्यू स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिकॉज पीपल कंट्रीब्यूट नहीं करे फेयरली। तो ये सब चीज अगर हम लोग सुधार दिया, अगर वी आर एबल टू डिस्कस विद पीपल, अभी हम लोग ओपनली पीपल से डिस्कस करो, ओपनली पीपल से, चाहे इंडो-फिजियन, चाहे तुखिस, चाहे तुमन, चाहे कोई भी, ओपनली डिस्कस करो दैट योर कंट्री इज इन क्राइसिस एंड वी नीड कंट्रीब्यूशन। इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट, वी नीड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। सबसे कंट्रीब्यूशन हम लोग नीड करता है, बिकॉज आप लोग कंट्रीब्यूट करें तभी तो हम लोग की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। ढेर रकम के फार्मिंग, अभी आप देखा हुए एक्वा कल्चर पीपल लोग प्रॉन फार्मिंग करे लगाए, आप देखा हुई पीपल लोग गुआवा फार्मिंग करे लगाए, आप देखा हुई पीपल लोग ड्रैगन फ्रूट करे लगाए। कोई बिजनेस छोटा नहीं रहे,
कोई तुम्हें एंड ऑफ द डे तुम्हें कोई की नहीं प्रूफ करे के। अभी आप देखो, हम तावा में हम एक पेशेंट के नाम बताए, बलवीर सिंह के, फॉरेस्टिक मामला। वो एक अच्छा ग्रेजुएट है, यूएसपी डिग्री ली से, मास्टर्स करे, गोल्ड मेडल उसके मिला रहा जब डिग्री करी सरा ना, बुक्स भी लिखी से, बट वो जाके फार्मिंग चूज करी से। अभी उसके फार्मिंग में आप देखो कितना सक्सेस है, तो कोई चीज छोटा नहीं। इट्स हाउ पीपल के मोटिवेट करेगा, यू मोटिवेट पीपल, आउटकम इज देयर। तो गवर्नमेंट के वो काम है। हम लोग की गवर्नमेंट जो इतना, कोई भी गवर्नमेंट रहा, वही तो बोलता कि हम लोग नेशनल इंटरेस्ट से चलो, हम लोग पर्टिकुलर जस्ट फॉर वोट और फॉर नेक्स्ट टाइम हम लोग वो रकम से नहीं थिंग्स करे लगो कि पीपल हम लोग वोट देना। तो वो सब चीज अगर गवर्नमेंट सुधार दे, या कोई भी लीडर्स जो ना आवे, अगर वो विजन से आवे फॉर नेशनल इंटरेस्ट, सब चीज सॉल्व हो जाए। देयर विल बी नो इश्यूज। 100% तो नहीं हुए, बिकॉज यू कांट चेंज एवरीवन्स माइंडसेट ना, बट काफी हद तक चेंज हो जाए। No, and a few times mentioned करा about national interest, and if आप लोग work करता है, you work for the whole people. लेकिन at the same time हम लोग देखेगा जो Indo-Fijian population है decrease होते जाए, and that's due to migration and other reasons as well, but mostly migration. हाँ। आपके suggestion कौन सी है? Because हम as an Indo-Fijian individual, हमें every now and then हमारा family पूछे कि तुम्हारा कोई प्लान से ओवरसीज जाके, न्यूजीलैंड जाके, ऑस्ट्रेलिया जाके काम करेंगे, एंड आई थिंक एक सर्टेन कल्चर डेवलप हो गया कि इवेंचुअली हम लोग के मूव आउट हो गए। एंड तो आपके कौन सी सजेशन है कि इंडो-फिजियंस लोग, हम लोग के अपकमिंग जनरेशन से, कि हम लोग यहाँ पर बिल्ड करो कि शुड वी लुक एल्सवेयर? आई थिंक अगर तुम देखो, प्रॉब्लम तो सब जगह है, राइट। और हम तो ओवरसीज भी जाके देखा है, और गुड थिंग है बताइए, फिजी रकम जगह नहीं मिली कोई जगह। एंड पीपल, कोई बात, फिजी पीपल छोड़ के चल भी दी से, हम लोग के इंडो-फिजियन फैमिलीज लोग, फ्रेंड्स लोग चल भी दी से, बट दे मिस फिजी के जो लाइफ स्टाइल है, यहाँ पे जो रकम के प्यार मोहब्बत है। हम लोग बोलता है कि यहाँ डिफरेंसेस है, हम लोग फील करता है कि यहाँ पे कोई रकम के डिस्क्रिमिनेशन हो जाए सोशल मीडिया में सब, बट इन रियलिटी तुम अगर ओवरसीज जाके देखो, ओवरसीज में यू डोंट इवन नो योर नेबर्स। वहां पे वो रकम से लाइफ है, तुम अपन नेबर्स के भी नहीं जानता, राइट। यू जस्ट माइंड योर ओन, तुम अपन काम करो। आई मीन अगर देखा जाए बहुत वैसे, वहां पे ऐसे पीपल गो वॉक, दे कम बैक होम, दे गो वॉक, दे कम बैक होम। वहां भी काफी बिल्स काफी हाई है सब चीज, राइट। घर के और एवरी मोर्गेज वहां काफी एक्सपेंसिव है। और हम तो यहाँ भी देखा, पीपल फिजी में मेहनत करके पैसा कमाए, वहां भी घर जाके ले ली से। तुम फिजी इज ए वेरी पीसफुल कंट्री, वेरी पीसफुल कंट्री। ये जब इलेक्शन आवे, जब पॉलिटिकल ये सब आता है, हम लोग की थोड़ा ज्यादा हम लोग फील करता है। बट ओवर द इयर्स अगर ये सब चीज नहीं रहे, अभी सोशल मीडिया हुए से थोड़ा और ये सब ज्यादा होए लगा है। बट अगर तुम अच्छा से देखो, हम तो बताए इंडो-फिजियन लोग के कि फिजी अच्छा जगह है, खाली तुम्हें अपने आप के कौन रकम से तुम अपने आप के रखता है, जैसे बोला जाए, रोंग टाइम रोंग जॉब नहीं रहो। आप अपन आप के कौन चीज में बिजी रखता है, अगर तुम बहुत दूसरा के लाइफ में इंटरफेयर करेगा, बहुत दूसरा के बारे में सोचेगा, तुम अपन आप में फोकस नहीं करेगा, यू विल बी डिस्टर्ब। तुम चाहे फिजी में रहो, फिर ओवरसीज भी चलो, तुम डिस्टर्ब रहेगा। तो वही चीज हम बताइए कि हम लोग के इन्वायरमेंट देखो, हम लोग के कल्चर देखो, फिजी में जो रकम से सब चीज हुए, हमें तो फिजी लगे पीपल के चाहे रीथिंक और फिजी में रहो, और गवर्नमेंट के भी फर्ज बने कि कैसे पीपल के सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। बिकॉज अभी हम लोग देखा है, जैसे अगर आप खेती बाड़ी में भी देखो, पीपल लोग मांगे रुस्टा फार्मिंग करे, या गोट फार्मिंग करे, या शीप फार्मिंग करे, या केटल फार्मिंग करे, बहुत भाई चोरी चपेरी हो जावे, तो पीपल वहां भी डिसार्ट हो जाए। लाइक हम लोग कभी कभी हम लोग देखता है कोई सुगा के फार्मा लोगन लेबा नहीं मिले, लोग ट्राई करे, चलो हम लोग मीट बेट फार्मिंग कर ली, या बकरी बेड़ा पाल ली, या चौवा पाल ली, बट कौन सी हो जाए, चोरी हो जाए, फिर पीपल चोरी कर लेते और पीपल डिसार्ट हो जाए। तो वो सब चीज कौन सी है, गवर्नमेंट के काम। हम लोग जो न्यू लीडर्स आएगा, आप देखा है पनिशमेंट, जैसे अभी कोई बटा चोरी करे उसके 8 मंथ्स मिल गए, एक बटा चोरी के लिए 8 मंथ्स मिल गए। वही जगह अगर कोई बकरी चौवा चोरी करे, उसके 2-3 महीना तुम बेच के बहिरे कर दो, इट्स अ जोक।
लीगल सिस्टम जो पे गए। तो वही चीज हम लोग ट्राई करो गवर्नमेंट के, अभी जो गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट या हम लोग भी आएगा कि कितना स्ट्रॉन्ग हम लोग रहता है ये सब इश्यू सॉर्ट आउट करे के, फार्मर्स लोग के, ग्रास रूट पीपल के, यू नो, पीपल में कॉन्फिडेंट आई चाहिए, पीपल यहाँ पे हैप्पी रही। और जो यू नो चोरी करेला भी डरी कि चलो मैं एक मुर्गा भी चोरी के 1-2 साल के भीतर चल दिया, तो ये सब कॉन्फिडेंट लायक पड़ी इस गवर्नमेंट। और वही चीज हम इंडो-फिजियन लोगों की बोलता है कि ट्रस्ट द न्यू सेट ऑफ पीपल, बिकॉज वी आर, हम लोग यही थ्रू यही सबसे गया है जो चीज आप लोग सब गन्ना खेती के तकलीफ से, या चौवा या मुर्गी या बेड़ा बकरी चोरी हुए से, या टाउन में बुली हुए से, या काम पे जाओ यू नो बुली हुए जाओ, या पीपल लोग तुम्हें यू नो बात नहीं सुने, यू नो काफी इश्यूज है। हम लोग सब वो इश्यूज से यू नो केम थ्रू, हम लोग आता है उससे। बट वही चीजें तुम कहाँ तक बगेगा। अभी यहाँ से अगर हमें देखो, हम सेटल हो गया फिजी में, अब हमें जाए कि अवश्य स्टार्ट करके आई हैव टू स्टार्ट ऑल अगेन। अब हम वहाँ पे तो घर नहीं ले पाएगा, कैसे कितना कमाएगा, कौन कम से, इट विल बी हार्ड। तो वही चीजें अच्छे से डिसाइड करो जो इश्यूज लोग ने, जब पीपल लोग आवे, गवर्नमेंट आवे, व्हेन दे मेक प्रॉमिस, हम तो बोलता पीपल स्टार्ट मेकिंग एग्रीमेंट विद पॉलिटिशियंस कि जो फेक प्रॉमिस करके चल दे, यू नो, पीपल show them if they don't fulfill. We think like that because that's what people are doing ना। we want real changes कि आप लोग हम लोग के जो चीज इशू है आप लोग बताओ कि हाँ भैया ये चीज चोरी हो तरह, इसके सोल्यूशन कौन सी है कि हम लोग के बकरी चौवा या कुछ भी हम लोग के चोरी होता, बेड़ा चोरी होता या बुली होता, इसके लिए तुम लोग सरकार कौन सी करता, कैसे सकता आप लोग कानून लावे कि आदमी डरे सब चीज करे से, और फिर हम लोग भी और मेहनत करके और प्रोडक्शन ऊपर करी ना। तो ये चीज हम इंडो-फिजियन के मनता बोले कमेटी के सब मिलके आओ संगे प्रस्ताव रखो हम लोग के लीगल सिस्टम के लिए और हम लोग के सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। हम लोग सब इकट्ठा हुए के, हम लोग के मेन चीज है, हम लोग घर द्वार तो बना लिया, मोटर सब चीज ले लिया, लड़कन के भी हम लोग पढ़ा था, बट हम लोग के मेन कौन से ने सेफ्टी सिक्योरिटी, हम लोग के घर के सेफ्टी सिक्योरिटी, हम लोग जो चीज पालता है या बोता है उसके सेफ्टी सिक्योरिटी, उतना अगर हम लोग इंडो-फिजियन के मिल जाए हम लोग फिजी में रहेगा। आई थिंक एक और इशू भी है जो केस ऑफ लॉस्ट आइडेंटिटी है, एंड आई थिंक कोई एक्सप्लेन कर इस रहा कि एक इंडो-फिजियन इंडिविजुअल एक्सप्लेन करता है कि समटाइम्स हम लोग फील नहीं करता है कि वी आर इंडियन इनफ। हम लोग कोई इंडियन से बात करता है इंडिया से, और हम बोले यू आर नॉट इंडियन इनफ, या तो फिजी में कोई इंडिजिनस पर्सन से पूछेगा यू आर नॉट फिजियन इनफ, एंड उसमें एक लॉस्ट आइडेंटिटी है, लॉस्ट कनेक्शन है, एंड सो व्हेन दे मूव उन लोगों के क्वेश्चन कोई वो नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। आप वो चीज कौन रकम से सकता है एड्रेस करे, कौन रकम से सकता है एडवाइस करे इंडो-फिजियंस के कि कैसे अपना आइडेंटिटी खोजो। देखो अगर आइडेंटिटी पे हम लोग बात करो, खाली इंडो-फिजियन ने आई तो कुछ भी, अगर हम काफी से मिला और हम दोनों ये चीज फील करे निगलेक्टेड, हम लोग फील करता है इंडो-फिजियन लोग कि हम लोग यहाँ पे पैदा हुआ, हम लोग बोर्न फिजी है, हम लोग यहाँ पैदा है, हम लोग मेहनत करा और फिजी के आज जहाँ है फिजी हम लोग के बहुत भारी योगदान रहा। बट अभी भी हम लोग के सेकंड क्लास ट्रीट मिले, हम लोग के लाइक ऐसा बुलांगी ट्रीटमेंट मिले, हम लोग के उला आइडेंटिटी अभी भी हम लोग जना, हम लोग यू नो हम लोग लुक फॉरवर्ड करता कि हम लोग को रिस्पेक्ट मिले। बट फिर तुम वही जगह तुम इंडिजिनस पीपल के देखो, लोग के प्राइमरी स्कूल से स्कूल किड्स लोग के देखो, आई बिन हम लोग से बात करा है, हम लोग के आई नो हम लोग के पीपल मेहनत करे से, नो डाउट मेहनत करी से, और अपन लड़कन के भी स्कूल रकम से भेजे है, कपड़ा देखो, जूता देखो, यू नो लोग खाना लेके जावे। बट वही जगह अगर आप इंडिजिनस के देखो, आई seen in the school system जो चीज हम लोग के डायरेक्टली हम लोग के पेरेंट्स लोग के बताता है कि you need to focus on your you know your kids instead of like you know जो तुम लोग हैबिट बना के रखा है ग्रो whatever। तो स्कूल में अगर एक आयतोकी लड़का के देखो ऑलवेज अपने आप के कंपेयर करिए इंडो-फिजियन से, माफ्टी डे में या तो स्पोर्ट्स ला में, या तो उन्होंने यू नो पॉकेट एक्सपेंस कुछ लाए दे, उनके कपड़ा के जो रकम से पहने या जूता पहने, या उनके रोज रोटी पार्सल डिफरेंट रखे, तो उसका वो लोग फील करे कि ये देश हम लोग लेना होना है, ये देश हम लोग के है, बट हम लोग से अच्छा तो वो लोग स्कूल आवे।
तो बेसिकली कौन चीज है द मैसेज फ्रॉम द पेरेंट्स अगर राइट वे से काम करे लगे, अगर लड़कन के राइट मैसेज दे लगी तो हमें लगे कोई निगलेक्ट नहीं फील करी। मेन चीज है हम लोग कौन सी करा, हम लोग एक जगह पे आई के जना सेपरेट हो गया, चाहे कू कल्चर लाए दो, चाहे पॉलिटिशियन लाए दो, कुछ लाए दो, और पूरा फिजी में चीज नहीं है सेट एरियाज में जहाँ पीपल लोग फील करे कि लोग आइडेंटिटी लूज कर दी से। बट हमसे पूछो और काफी जन से पूछो जो लगे नहीं, वी आर लिविंग विथ ए वेरी गुड सेट ऑफ पीपल, दैट आवर इंडिजिनस पीपल, आवर लैंडओनर्स आर वेरी गुड, वेरी विथ अ वेरी प्योर हार्ट। सो वही चीज बोलता है कि समटाइम्स हम लोग भी अपने आप की देखो व्हाट वी आर डूइंग, कितना इन्वॉल्वमेंट हम लोग रहता है। हम एक फार्मर्स लोगों के संगे बैठा रहा तो हमें फार्मर्स लोग बताए बोले ये पहले जमीन में सब गन्ना उतरा, बोले अब देखो जंगल हो लगा। तो फार्मर बोला बोला अच्छा जंगल तो हुए बट अच्छा चलो वट एवर हो ही गए, यहाँ से आगे कौन सी सोचता तुम लोग, कभी तुम लोग जाके बैठ के उन लोग संगे बात करा कि चलो हमारे लिए टिकटा है, हमें तुम्हें फ्री $30 के कुछ हाफ एन आवर कुछ लोग प्लाव कर देगा, तुम कसेरा बो दो या तुम गन्ना हमारे संगे शेयर फार्मिंग कर लो, कोशिश करके देखो। अब अगर तुम उसके जमीन जोत के दिया और कसेरा वो पहला बस्ता कसेरा तुम्हें लाइक दी, उन लोग के दिल होता है। बट हम लोग कौन सी अपने आप के बहुत रिजर्व कर लेता, हम लोग बहुत लाइक डिल्यूजन राइट, हम लोग बहुत लाइक डिफरेंट वे से कभी कभी सोचता, हम लोग अपने आप के अब वो रकम से सिंस हम लोग पॉपुलेशन इतना कमती हो गया और अगर हम लोग मनता बना आइडेंटिटी लावे द ओनली वे हम लोग सकता है चीज करे विथ लव अफेक्शन और यूनिटी। तो हम लोग कैसे वो लोग के संगे सकता अपने आप के रिलेट करे और कैसे सकता हम लोग, और दिस इज थ्रू द लीडर्स, नेशनल लीडर्स, ऑर्डिनरी पीपल नहीं कर पाते बताता, बिकॉज डिफरेंसेस बे है नेशनल लेवल में वे। तो हम लोग वी नीड दोज लीडर्स, दोज काइंड ऑफ माइंड जो ऊपर जाए के उला चीज पे विषय में बात करें, दे कैन relate to people in whatever language which group is very much in. तो वही लाचिदम हम hope the national leaders they can work with the traditional leaders, religious leaders, committee head से, तो हमें लगे उला अगर चित कर दिया तो आइडेंटिटी लोगन lost identity I think can we can again get it. And I think एक और इशू भी है कि हम लोग के confidence in our leaders, because not me particularly but generations before me, Indo-Fijian generations लोग face करे से coup culture and multiple coup culture। 1987 में 2 coup है, 2000 में 1 coup है, 2006 में 1 coup है, दो people लोग try करे undermine करके but it's still a coup ना। And so जब उला सब coups लो, all those 4 coups, primary victims, I mean it affects the nation as a whole but primary targets have been Indo-Fijians। तो कौन रकम से Indo-Fijian population लोग सके confidence लाए? देखो उला चीज इट्स अ वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन राइट। पहला चीज हम लोग समझे पड़ी कितना कू आप बोला भाई 4 बे, तो 4 कू में जैसे बोलता कि हम इंडो-फिजियन अफेक्ट, बट अगर आप तुम कू देखो उसमें तो एक 2000 में के लिए मेन चौधरी रहा जो हम लोग के लीडर जहां पे उसके निकाला गया, बट उसके अलावा जितना कूब है उसमें तो लीडर्स आई तो की लीडर्स रहा। सोच जैसे हम लोग की सोच तो racially motivated 1987 अगर हम उसके देखो उसके मोटिव अगर देखो राइट, हम लोग बहुत ढेर चीज को सोचो, बट उसके बाद कौन सी है 87 में कूब है, 87 टू 1998 बिफोर लेबर गवर्नमेंट, उसमें हिंदुस्तान से बे कौन सी। हाँ 87 कू में थोड़ा मिसअप लोग बे रहा, हम लोग के लेडीज लोग के संगे कुछ ना बे बदमाशी, पीपल लोग के मारा गए बे ड्यूरिंग कू बे। बट आफ्टर कू अगर तुम देखो 87 से आई थिंक 1992 तक इंट्रीम रहा, फिर गवर्नमेंट इलेक्ट बे, फिर अगर आप देखो 1997 में कॉन्स्टिट्यूशन भी बना राइट। हम अगर पीपल के हिंदुस्तानी लोग समझाया मनता है चीज 87 से अगर आप 1998 देखो, फिजी में टाउन सिटीज एग्रीकल्चर कौन बड़ी से कोई बात, रंबुका रातू मारा रहा, फिर रंबुका सरकार रहा, बट हम लोग बिजनेस में बड़ा, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में 99% इंडो-फिजियन बड़ी। आप टाउन्स एंड सिटीज में जाके देखो किसके नाम है 87 से 1998 तक। आप एग्रीकल्चर साइड देखो
फार्मिंग साइड देखो वो टाइम में लीज वाला इशू नहीं रहा, इशू बे हम लोग के लीज ला 2000 से ज्यादा करके, बट वो टाइम अगर तो आप देखो फिजी के अगर रंबुका कुछ अच्छा कू करे के बाद में हम नहीं किया उसके सपोर्ट करता, बट हम बताता कि रिसर्च हम लोग जैसे भी आता है, हम लोग बहुत पढ़ता है अभी, हम लोग रात के 2 o'clock 3 o'clock पढ़ता, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के रिसर्च करता है, कूस के रिसर्च करता है, जितना नेशनल इश्यूज है उस सब में बैठ के हम लोग बहुत भारी अपन रिसर्च करता है और उसके लिए रेडी होता है कि हम लोग सरकार में जाकर हम लोग के लिए सब आंसर ही। तो आप अगर देखो 87 में अगर कू बेरा 87 से 98 लगी जो हम लोग के हिंदुस्तानी कम्युनिटी के संगे कुछ नहीं फिर बे कूम बे, बट उसके बाद कुछ नहीं बे, टाउन्स एंड सिटीज में लोग बड़ी से एग्रीकल्चर साइड बड़ी से बहुत कुछ बे, और अगर कुछ चेंज बे खाली नाम चेंज बे, डोमेन ऑफ फिजी से बेरा रिपब्लिक ऑफ फिजी, फिर 1997 कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था रिपब्लिक ऑफ फिजी आइलैंड्स बे। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन भी देखो, अगर रंबुका गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई रहा आफ्टर कू 87 कॉन्स्टिट्यूशन बनाई कौन रहा, प्रोफेसर ब्रिजलाल, 3 जन रहा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, 3 जन रहा, 2 गोरवा रहा, 1 हिंदुस्तानी रहा, हिंदुस्तानी बने सर 1997 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोफेसर ब्रिजलाल, और उसके एंडोर्स कौन करी सर, जयराम रेड्डी कोया ये लोग सब एंडोर्स करी सर ऑपोजिशन में। तो अगर आप देखो कू बे, बट कू के बाद में कौन सी बे, यू नो, तो अगर आप अच्छे से देखो कोई भी कू बे 2000 कू, हाँ जितना रोज रखी सरा यू नो हम लोग के प्राइम मिनिस्टर के उसके फैमिली और लोग लाइक जितना जन हॉस्टेज रहा लोग काफी फिजिकली मेंटली हेड बे रहा, पीपल लोग यू नो डिस्टर्ब बे रहा, बट उसमें भी ढेर रकम के बात आवे कि दैट वाज यू नो रेज बेस कू, और you know like business motive, you know lot of people, तुम जानो ढेर चीज उसमें आई रहा, हम नहीं मानता उसमें जाओ राइट, बट लाइक अगर पीपल के तुम रिसर्च करो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर इन्वॉल्व। अगर आप जो स्पेट के बारे में रिसर्च करो, रहा कौन रहा, कौन चीज के मोटिव रहा, वो ऑस्ट्रेलिया से है कि कौन इंडस्ट्री देखत रहा, कौन सेक्टर देखत रहा, फिजी मोगनी, फिजी हार्डवुड, फिजी पाइन, उसके टेमनेट भी कौन करी सरा वो टाइम जो नाम के आए तो कि फॉरेस्ट्री मिनिस्टर रहा बोसे नो, फिर कैसे वो एक जो पेशेंट के लिए पैसा नहीं रहा, कैसे कू करीस, लाइक लॉट ऑफ थिंग्स ना। और फिर अगर आप देखो 2000 उसमें जो ग्रासेला कू में, वो तो ग्रासे प्राइम मिनिस्टर रहा, उसमें तो कोई रकम से इंडो-फिजियन के इंटरेस्ट नहीं रहा, जो पीएम बेनीमामा कू करीस रहा। तो वही चीज है, हम लोग जो रकम से हम लोग सोचता है, कभी कभी हम लोग की सोच ऐसी नहीं है कि हम लोग जो चीज सोचता यू नो राइट हो सके, हम लोग के थोड़ा रिसर्च करे पड़ी कि कौन सी कू से पहले बे रहा, कौन सी कू ला टाइम बे, और कू के बाद में कौन सी बे। अगर हम लोग राइट वे से सब चीज देखें तो हम नहीं सोचता कि हाँ कू अफेक्ट करी से हम लोग कंट्री के एज नेशन अफेक्ट करी से फर्स्ट थिंग, कू हम लोग के पीछे लग गए, चाहे हिंदुस्तानी रहे चाहे तो कि सब अफेक्ट है कू इज नॉट ओनली कि हम लोग हिंदुस्तानी अफेक्ट हुआ, सब अफेक्ट हुआ, हम तो बताए एवरीवन, एवरी रेस एंड रिलीजन गोट अफेक्टेड बाय कू। और अगर हम लोग बात करेगा अभी पीपल लोग के कू लोगों के बारे में, तो बताइए ज्यादा कू में तो इंडिजिनस लीडर्स के निकाला गया प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से, हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर तो एक दफा रहा, तो अगर हम उसमें अगर बैलेंस करें तो हम लोग तो पीछे हो जाता और उन लोग के तो ज्यादा हो गए। तो वही चीज हम लोग के सोचे कि ना हम को रकम से सोचता वो चीज है। एजुकेशन रिफॉर्म कौन सी आपके प्लान है रिगार्डिंग दैट? देखो इसमें तो पहले तो हम मनता वही चीज बतावे कि हम लोग एक फाउंडेशन मिल गए राइट, कोई भी सरकार रहा अभी अगर आप फिजी के देखो, फिजी ग्लोबली काफी रिकग्नाइज्ड हो गए। आप देखा वही चाइना के प्रेसिडेंट, इंडिया के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यू नो काफी बड़ा बड़ा कंट्रीज लोगों के डिप्लोमेटिक पीपल होना हुए। और वही चीज जैसे बोलता है कि नेशनल लीडर्स ना कोई भी है को रकम से वो लोग डिप्लोमेटिक डायलॉग्स रखी से और जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप के कारण ना बहुत भारी देखा जाए बहुत भारी चेंजेस आएंगे फिजी में। फिजी इज लाइक आई विल से विथ ऑल दिस पावर हाउस कंट्री, फिजी काफ़ी एडवांस होए लगा है। अगर आप देखो फिजी पैसिफिक आइलैंड में, अगर आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बाद में देखो, फिजी बहुत नेक्स्ट लेवल है कंपेयर टू अदर पैसिफिक कंट्रीज। तो हम लोग के टूरिज्म भी यू नो अगर देखा जाए थैंक्स टू यू नो every government who have helped in our aviation industry और tourism industry में और
एडवांस करे के लिए जितना भी काम करी से उसके लिए हेड्स ऑफ टू ऑल द गवर्नमेंट। पॉजिटिव वे से देखो कि एक फाउंडेशन मिल गया कि गवर्नमेंट जितना गवर्नमेंट भी लाइक के हम लोग के एक रिकॉग्निशन दे दी से पैसिफिक आइलैंड में कि वी आर वेरी नेक्स्ट टू ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, यहाँ से कैसे हम लोग कैरी ऑन करेगा। तो उसके लिए एजुकेशन रिफॉर्म बहुत जरूरी है, बिकॉज एजुकेशन हम लोग के वो लेवल पे ले आके पड़ी जहाँ हम लोग के हेल्प करी इंटरनेशनल डायलॉग जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप के जितना भी, और प्लस लेबर मार्केट के लिए भी। और अभी आप देखा वही जो लेबाला जो फॉरन ना हम लोग जाता जो सीजनल वर्कर्स ला, तो सबके लिए एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग कैसे अपन एजुकेशन के अलाइन करता टू फिल दैट लेबर शॉर्टेज। और अगर हम लोग के नेबर कंट्री ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड रिक्वायर करती से स्कीम वर्कर्स कैसे हम लोग थ्रू एजुकेशन राइट पीपल के सकता हम लोग सपोर्ट करके आगे लिख जावे कि हम लोग के रेवेन्यू जनरेट हुए और हम लोग के लेबर जो हम लोग इंपोर्ट करता है क्लोज टू 10 to 15,000 लेबर्स। अभी हम रिसर्च करत रहा कि उतना लेबर्स के स्किल लेबर्स के रिक्वायर्ड है फिजी में, जहाँ पे हम लोग बाहर देश से मनता लेकर आवे, बिकॉज यहाँ पे है नहीं। तो दिस इज टू डू विद द एजुकेशन। तो आप देखेगा पिछले सरकार वही तो बोला कि सब सरकार अच्छा काम करी, कुछ कुछ शॉर्टफॉल रहा सबके, बट अगर तुम एजुकेशन के देखो, अगर हम हमारा कंपनी के देखो, आप हमारा कंपनी फिजी में काफ़ी बड़ा बड़ा कंपनी के संगे डील करे। हम ऑफिस स्टाफ के बदले हमारे अगर ट्रेड ला के देखो, सब क्लास 8 Form 4 ड्रॉप आउट से। और हम फिजियोटा, बेवरेजेस, एविएशन इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, मरीन टाइम में सुपाई होटल में सब जगह हमारे लड़कन काम करी से, तो लोग सब क्लास 8 Form 4 ड्रॉप आउट है। अगर आप फिजी के लेबर मार्केट देखो, 80% ना ब्लू कॉलर जॉब, चाहे ट्रेड पीपल है, चाहे सुपर मार्केट्स में काम करे, चाहे बाबा शॉप में काम करे, चाहे खाना शेफ लोगन है, कोई साइड भी आप देखो जो ब्लू कॉलर हम लोग बोलता, वहाँ नंबर्स के ज़्यादा जरूरी है। तो हमें लगे माइग्रेशन है, इशू है, बट ऐसे नहीं कि हम लोग पॉपुलेशन कम थी हुई यूथ्स के, बट हमें को लगे जो लास्ट गवर्नमेंट जो एजुकेशन की तुम फेल भी करा, तुम Form 6 तक जाओ, उसके बाद तुम फिर टेल्स अप्लाई करके 2-3 साल उधर। तो पहले हम लोग के टाइम हम लोग देखा था पेरेंट्स लोग अगर लड़कन स्कूल में अच्छा नहीं करे ना, वो लोग अगर अच्छा नहीं करे तो वो लोग के ट्राई करे मोनफोर्ट बॉयज टाउन भेजे के, या वोकेशनल भेजे के, या एग्रीकल्चर साइड वो लोग के डाइवर्ट कर दे, या कोई भी वैसे ब्लू कॉलर जॉब जैसे या सैलून में, या शेफ या वट एवर, वो एरियाज में पेरेंट्स लोग के डाइवर्ट कर देता रहा कि इंस्टेड ऑफ वो लोग Form 5 Form 6 जाए कुछ नहीं अचीव करे, उसके बाद भी चलो ये लोग के 1-2 साल हम लोग ट्रेनिंग दे दी ये सब स्किल में आई, जो 17-18 लोग काम करे लगी। तो उला चीज हम लोग के जो रहा डायरेक्ट हम लोग के स्किल वर्कर्स मिल जाता विद एक्सपीरियंस, कपेंटा, वेल्डर, ड्राइवर, मैकेनिक्स, वट एवर हम लोग के मिल जाता रहा उला। बट जब से एजुकेशन रिफॉर्म पे पीपल Form 6 तक जावे, एज ऑफ 17-18 स्कूल जावे और स्कूल परफॉर्म नहीं करे, उसके बाद टेल सप्लाई करके, सो पीपल गो लाइक अभी हम लोग देखता है क्योंकि एज ऑफ 24-25 तक ये स्कूल सिस्टम में रहे एज ऑफ जो हम पहले 15 से हम लोग के मिले लगातार ट्रेनिंग जो सर्टेन सेक्टर्स में, अब एज ऑफ 25 चल रहे, जो 10 ईयर लेप्स है उला हम लोग के एवरी ईयर लेप्स जाते रहे। तो उसके लिए हम लोग के कौन सी करे पड़े, रकम के एक्सपीरियंस पीपल मिले नहीं, तो कंपनीज लोगन फॉरेन वर्कर्स लाए लगा, बांग्लादेश से, इंडिया से, श्रीलंका से, मलेशिया से, चाइना से, फिलीपीन से। तो उसमें कौन सी हुई है, अब पैसा तो बाहर देश जावे, प्लस जो ये लड़कन जो फिर निकले इतना स्कूल सिस्टम के बाद में, पहला तो राइट क्वालिफिकेशन और राइट एक्सपीरियंस से नहीं निकले, और थ्रू हार्ड वर्क, स्कूल में अगर हार्ड वर्क नहीं करी वो लोग के वो कल्चर में बोला नहीं फिर रहे कि चाहो वही रकम से कंपनी में भी काम करो, तो लोग के फिर काम नहीं मिले, तो लोग फील करे कि हम लोग निगलेक्ट हो गए, हम लोग यहाँ काम नहीं मिले, तो चोरी चकारी करो, प्रिजन चल दो, ड्रग्स में चल दो। तो हमारा वही चीज़ है, हम लोग के एजुकेशन रिफॉर्म बहुत बहुत देखे पड़ी। कोई ऐसे नहीं कि कोई स्टूडेंट के डिग्रेड कर दो कि नहीं तुम नहीं Form 4 अच्छा पढ़ा, तुम Form 5 नहीं चाहेगा, गवर्नमेंट तुम्हें नहीं सपोर्ट करी। गवर्नमेंट ट्राई टू
आई जो 15-16 से ट्राई करो कि कौन कौन एरियाज में अगर हम देखो कि चलो 100 पीपल इलेक्ट्रिशियन माइग्रेट हुई है तो हम लोग नेक्स्ट सेट ऑफ 100 रेडी हुए कि नहीं. तो अगर हम लोग वैक्यूम फील करे लगा, अगर हम प्रॉपर एक रिकॉर्ड रखा, रिसर्च रखा कि माइग्रेशन या वट एवर एरियाज में पीपल नंबर्स रिक्वायर्ड है, हम लोग नेक्स्ट सेट ऑफ पीपल रेडी करता कि नहीं. तो हमें लगे उला एजुकेशन रिफॉर्म बहुत जरूरी है टू गेट आवर स्टूडेंट्स रेडी फॉर लेबर मार्केट एट वेरी यंग एज 18 या 19. तो हम लोग का लेबर शॉर्टेज भी हो जी, फिर हम लोग के पैसा भी बहरे देश नहीं जी, और फिर थोड़ा सीरियसनेस भी स्कूल में आए जी. अभी तो स्कूल लड़का खिलवाड़ में जाए, टीचर्स के बुली कर दो, टीचर्स की गाली दे दो, बिकॉज भाड़ा नहीं भरे पड़े, पैसा नहीं भरे पड़े स्कूल के, कोई रकम टीचर्स मास्टर्स लोग स्ट्रिक्ट नहीं है, फेल भी करा कोई रकम से, पेरेंट्स के बगल से कोई रकम से स्क्रूटनी नहीं है, टीचर्स लोग भी कुछ नहीं कर पाए. तो हमें लगे एजुकेशन रिफॉर्म बहुत जरूरी है. और हमें लगे जो चीज बेरा नहीं राइट बेरा. तो अगर हम लोग मानता काफी एरिया सुधारे, लेबर शॉर्टेज मतलब अपन इकोनॉमी सुधारे, लेबर शॉर्टेज वाला जो चीज इशू है या क्राइम है या बहुत ढेर इशू हो जावे, ये सब चीज स्कूल सिस्टम से हम लोग के टाइम राइट वे से होता रहा. अब हमें लगे उला सिस्टम ही हट गया. तो अगर हम राइट वे से फिर से रिफॉर्म करा, we'll have a chance to start correcting our mistakes. नहीं तो इला फिर every time इला हमें लगे फिर बढ़ते रही. I think reinstatement of GCC following जब इला गवर्नमेंट आई से पावर में, आपके कौन सी व्यू है GCC के, एंड if you get into power, कौन सी आपकी विजन रही, to continue with GCC or have other plans for it? देखो, GCC is not a government institution, right? Basically, but it's still quite influential. It is, but that's what I'm saying कि अगर if you look at from the national leaders perspective, it is वो एक रकम के government institution नहीं है, right? कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी रिलीजन के या कोई भी रईस के भी वो एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो गवर्नमेंट के नहीं से कंट्रोल करे. गवर्नमेंट लीडर्स दे आर द वन हु हैव द ओवरऑल राइट टू रन द स्टेट. अब जीसीसी के अगर आप दो ऐसे देखो, राइट, जीसीसी के रोल्स लोग देखो और रिइंस्टेट बे या उन लोग के लास्ट गवर्नमेंट निकालीस भी उसके इफेक्ट्स देखो, लुक ऑन द बोथ साइड ऑफ थिंग्स, राइट. अभी हम लोग भी काफी चीफ लोगों के संगे बैठता, हम लोग भी काफी ऑर्डिनरी पीपल के संगे बैठता, तो मिक्स उन लोगों के साइड से भी, हम लोग के इंडियंस पीपल के साइड से भी मिक्स फीलिंग है उन लोगों के लिए. एक जो ना भी करंट प्राइम मिनिस्टर रिइंस्टेट करी से, और जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर उन लोगों के हटाई सरा. बट उन लोगों के देखो, उन लोगों के वही चीज हम बताते कि उन लोग अपने आप में बहुत ढेर चीज में दे आर कंफ्यूज्ड. तो जब हम लोग आए कंफ्यूज्ड है लीडर्स लोग की दी इंडियंस पीपल. देखो अभी ये जैसे पहला चीज हम बताइए जीसीसी के रोल बताइए, राइट. अगर जीसीसी के रोल देखो, जीसीसी इज बेसिकली ऑल द चीफ्स, राइट. दैट्स व्हाट इट इज, ग्रेट काउंसिल ऑफ चीफ्स. तो चीफ्स लोगों के एक रोल रहा, रोल टुवर्ड्स देयर प्रोविंस, रोल टुवर्ड देयर डिस्ट्रिक्ट, राइट. तो चीफ लोगों के एक आइडेंटिटी मिला रहा चीफ के कि हाउ दे कैन ट्रेडिशनली और कल्चरली कंट्रोल देयर पीपल, हाउ दे कैन हेल्प देयर पीपल, हाउ दे कैन मोटिवेट देयर पीपल टू सेव द नेशन. तो हमें लगे जीसीसी में मेन प्रॉब्लम है जीसीसी स्ट्रक्चर नहीं राइट वैसे. अगर आप ऑर्गेनाइजेशन देखो, कोई ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम लीग देखो या संगम ऑर्गेनाइजेशन, सनातन ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स के बाद में काउंसिल भी है, where things like motion जावे, pass हो फर्स्ट या सेकंड हो, it's a discussion. बट अभी हम लोग के जीसीसी में कोई रकम स्ट्रक्चर नहीं है. और जीसीसी तुम डायरेक्ट भी हटाई दिया, जैसे लास्ट गवर्नमेंट डायरेक्ट हटाई दिस रहा, तो जैसे बोलता मिक्स फीलिंग आई रहा. कोई इंडियन पीपल बोले अच्छा जीसीसी हटे से पैसा बराबर बटे लगा सबके, दे आर गेटिंग सम मनी ना, इक्वली शेयर हुए लगा. और फिर कोई बोले जीसीसी हटाए से हम लोग के कल्चर और हम लोग के ट्रेडिशन, हम लोग अपन यूथ के कंट्रोल नहीं कर पाता. तो उसके लिए हम जाए के काफी चीफ लोगों से मिला, बैठ के बात करा, रिसर्च करा. तो उनसे पूछा कि कौन सी इशू है. तो लोग बोले देखो जब लास्ट गवर्नमेंट जीसीसी हटाई रहा ना, वो लोग रिस्ट्रक्चर करे बोले डायरेक्ट जब हटाई दी तो हम लोग के चीफ लोगों के तुरानी कोर लोगों के हम लोग के ताकत मार दी रहा.
पहले अगर हम कोरो में बता देगा यूथ्स लोगों के या पीपल के बता दे कि एरिया तांबू है या तुम लोग नहीं सकता विलेज में इतना बजे जावे, लड़कन नहीं सके 6 o'clock के बाद घूमे, और तुम पी वी के नहीं सकता आवे, ड्रग्स नहीं सकता लेवे, नो जो विलेज के बायलॉज लोन रहा, विलेज के बायलॉज रहा जो चीफ लोगों के काम रहा, देखो कि बायलॉज लोग ना है और द इंडियन पीपल आर फॉलोइंग दैट बायलॉज। तो जीसीसी जब डायरेक्ट हटा तो बायलॉज लोग भी सब हट गए, चीफ के ताकत हट गए, पीपल लोगन ह्यूमन राइट के बात करे लगा, चीफ लोन के और तुरंगी को जितना रहा लोन अपन यूज या पीपल के कुछ बोले से पहले अपन ह्यूमन राइट के बात करे लगा। तो ये सब फैक्टा आज हम लोग के अफेक्ट करे बिकॉज कौन चाहिए पीपल को उतना फ्रीडम मिल गए। और हम लोग के इंडिजिनस पीपल अगर आप देखेगा वो लोग हम लोग के नेशनल लॉ से उतना नहीं चलत रहा, वो लोग अपन ज्यादा ट्रेडिशनल और ट्रेडिशनल लीडर्स की बात सुनत रहा। तो वंस हम लोग उला चीज डायरेक्ट हटाए से हमें लगे हम लोग डायरेक्टली कौन सी करा उन लोग के जो सुपरविजन जो कंट्रोल रहा जो ट्रेडिशनल लीडर्स के उला मौटाए दिया, वो चीज हम लोग लास्ट सरकार वो चीज करी से, तो अब वो लोग को एक बात सुनी नहीं है। तो अगर हम लोग मनता फिर से जैसे अभी हम लोग इंडो-फिजियन एक्चुअली जीसीसी के लेके बहुत लाइक ली शलाई इशू और ये सब चीज लेके बहुत अनसिक्योर्ड फील करे, वो लोग सोचे गोली बिल अगर तुम अच्छा से देखो जब लाइट ग्रास से इंट्रोड्यूस करे सा गोली बिल, वो गोली बिल इंट्रोड्यूस करी सा बट उसके टूवर्ड्स कौन से काम करे, आप मोमी जमीन जाके देखो, नतनदोला जमीन जाके देखो, वो तो अपने कॉन्वर्ट करे सा नेटिव से फ्री होल। तो वही चीज बोलता कि हम लोग कभी कभी लीडर्स के बात सुन के द पीपल जो हम लोग 2 मेजर रेसेस है वी अपने आप में डिस्प्यूट कर लेता, अपने आप में हम लोग कन्फ्यूज हो जाता। तो जीसीसी के रखे से क्या राइट वैसे जीसीसी रिस्ट्रक्चर करा जो ची अभी हम लोग के प्लान से द प्लान फॉर न्यू लीडर्स इज टू सीट एंड डायलॉग विद द ट्रेडिशनल लीडर्स बिकॉज वी नीड, हम लोग कंट्रीब्यूशन नीड करता। हम जैसे बोला कि वो लोग के बेथ रेट 82% है, पॉपुलेशन उन लोग के ज्यादा है। अगर हम लोग इंडो-फिजियन जो फिजी में है अगर हम लोग मनता देश आगे बढ़े तो हम लोग के योगदान मांगे, और उन लोग के योगदान मांगे के लिए उन लोग के कंट्रोल रहे मांगे, उन लोग के लीडर्स के उन लोग में मांगे कंट्रोल, नहीं तो उन लोग के कोई डायरेक्शन नहीं रही, उन जिधर मुड़ रहे उधर चल पड़ी। तो उन लोग के चीफ और उन लोग के जो ट्रेडिशनल लीडर्स उन लोग के बात दिखाई पड़ी, उन लोग के लेकर आए कि कमेटी में संगे रख के उन लोग के समझाए। वही चीज हम लोग जब सरकार में जाएगा वही रकम के हम लोग के प्रिसेव कल्चर ऑल दिस थिंग्स वी हैव टू टॉक टू देम, जो ट्रेनिंग देख पड़ी उनके ट्रेनिंग एंड फ्यूचर प्लान्स है और कैसे लोग अपन यूटिलाइज करी, लोग जमीन कैसे दे इन्वेस्टर लोग बिकॉज वी नीड फॉरेन इन्वेस्टर्स। हम लोग की जीडीपी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वी आर नॉट लकी लाइक ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। जैसे बोलता कि फिजी इज क्लाइंबिंग वेरी हाई इन पैसिफिक कंट्रीज एंड वी आर नेक्स्ट टू ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, बट हम लोग के रिसोर्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है लाइक रिसोर्सेज। बट हम लोग के अगर मनता अपन 20 मिनिस्ट्रीज चलाए, अगर हम लोग मनता फिजी की इकोनॉमी रिवाइव करे, एक्स्ट्रा लोन में नहीं रहे, तो हम लोग के इंडिजिनस पीपल के लैंड पार्टनरशिप में उन लोग के लगाए पड़ी, दे नीड टू उन लोग के अपन जमीन और अपन रिसोर्सेज शेयर करे पड़ी, देख पड़ी, प्रमोट करे पड़ी कि इन्वेस्टर आए ना। तो ये सब चीज करे के लिए आई थिंक वी नीड ट्रेडिशनल लीडर्स, वी नीड गुड गवर्नमेंट और टू नेगोशिएट, बिकॉज इंडिविजुअली अगर हम लोग जाए के एक से तो नहीं बात कर पाएगा। वी नीड देयर ट्रेडिशनल लीडर्स, देयर मतंगाली हेड, वी शुड डिस्कस। तो हमें लगे जीसीसी नीड्स रिस्ट्रक्चर, रिमूवल नहीं, बिकॉज उसके रिमूव करके देखा भी गए कि बहुत ई साइड अफेक्ट होने लगा, जो उन के बायलॉज लोग विलेज बायलॉज, people are not giving respect to their village bylaws, people are not giving respect to their chiefs, तुरंगी निकोरस मतलब किना वो लोग ह्यूमन राइट्स बात करने लगा। नो, वी नीड चीफ्स टू ब्रिंग द विलेज लॉ बायलॉज टू हैव अ कंट्रोल ऑन देयर कमिटी। सो बोथ साइड से देखो ना जीसीसी के वो है ये नेशन में ढेर जन आर्ग्यू करे एक फ्रीबी कल्चर हो गया है, हम लोग एक्सपेक्ट करता है सब्सिडीज, एक्सपेक्ट करता है grants, I mean, well, grants and less agriculture than different, but just freebies in general. आपके कौन सी take है on this? See, देखो freebies ला हम बहुत openly बात करेंगे, right? As I said beginning में, I'm not afraid. I can sit in front of 1,000 indigenous people and I can still, talk on the facts. I can sit in between of 1,000 Indo-Fijian and I can still talk on facts. तो जो फ्रीबी कल्चर है, राइट,
अगर आप देखो अभी अभी हम लोग जाता है, पीपल उनसे मिलता है, हम आप देखा हुई हम फेसबुक में कमेंट करता है दैट लॉट ऑफ इंडो-फिजियन आर टेनिंग टू अस. काफी इंडो-फिजियन हम लोग के बल टेन होने लगा बिकॉज द मैसेज हम लोग जो चीज देता है. देखो फ्रीबी कल्चर के पहला चीज तुम्हें लाइक नथिंग अगेंस्ट आउट की पीपल, राइट, नथिंग अगेंस्ट आउट की पीपल, अगेन हम बोलता नथिंग अगेंस्ट, बट जैसे बोलता कि उन लोगों के योगदान जरूरी है, उन लोगों के कंट्रीब्यूशन जरूरी है, तब देश आगे बढ़ी, राइट. हम तो लोग डायरेक्ट बोलता है कि अगर वो लोग डिपेंड रही और वो लोग कंट्रीब्यूट नहीं कि देश आगे नहीं बढ़ पाई. अब फ्रीबी कल्चर तुम देखो, हम लोग के हिंदुस्तानी जो समाज है, वो लोग बोले अरे वो सरकार इतना अच्छा रहा, ये सरकार इतना अच्छा रहा, वो लोग इतना देता रहा, ये लोग ज्यादा दे लगा, या ये लोग कमती देवे, या मदद होता रहा. तुम अच्छे से अगर देखो, हम लोग जो हिंदुस्तानी समाज है लगभग 90 to 95% हम लोग गिरमिट के टाइम से काम करते आए गया, बहुत मेहनत करा गए. गोरवा लोग भी हम लोग के स्लेव रकम रखी सरा, हम लोग के एंसेस्टर्स की इजी लाइफ नहीं मिला रहा. अगर आप बोलता है कि मदद तो ये फ्रीबीज देखो, अच्छा एक सरकार एक कानून लाई सरा कि एक बेबी पैदा हुए $500 मिली. अब फिजी में तो बेहतर 82% इंडिजिनस पीपल के, तो 500 जावे कहां? फिर 5 डे फादर के पेटर्निटी लीव हो जाए. अब हम लोग कुछ करते हैं, हम लोग कॉर्पोरेट के ऊपर भी लोड, यहाँ तो फिजी में 10-12 कॉन्स्टिट्यूशनल डे सब आए लगा, और प्लस हम लोग के रिलीजियस और हम लोग के नेशनल कुंची हम लोग के पब्लिक हॉलीडेज है, और फिर हम लोग पब्लिक हॉलीडेज लोग 5 और ऐड कर दो पेटर्निटी में, तो हम लोग जो कॉर्पोरेट के और हार्डशिप में लेकर चल देता, जो छोटा छोटा बिजनेस कैसे सर्वाइव करी. तो वो चीज तुम देखो कि वो जगह पे फेयरनेस नहीं रहा. हिंदुस्तानी समाज के लिए बहुत 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 बनाए आने उबे कि ये लोग मेहनत करे, ये लोग काम करे, बट माँ 82% बेहतर तो लोग के पैसा तो माँ जावे, वो लोग के वो मिले डे ऑफ. और इंडस्ट्री भी देखो, कॉर्पोरेट देखो, हिंदुस्तानी तो ज्यादा होने से तो टूटा माँ. फिर उसके बाद अगर तुम एजुकेशन में देखो, जो फ्रीबीज लाइक पे स्टूडेंट $180 फेयर सब मिला था, हम लोग के डबल, तो वो लोग मोर देन 70% उन लोग के स्कूल में स्टूडेंट है, और हम लोग तो खाली 30% कुछ है, लेस देन 30 अगर देखा जाए 20-22% है, बिकॉज 8% आदर्स आ जा रहा, तो मैंने राम भी है और तभी आधा कमिटीज लोग है, राइट. तो उसमें भी हम लोग के 3 times मोर दे रिसीव. यहाँ भी मेहनत हम लोग करता है और पैसा जावे, जो नहीं स्कूल सिस्टम में जावे, मदद करे चाहिए, बट थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहे चाहिए. ऐसे नहीं कि लड़कन स्कूल नहीं जावे, लड़कन पंचुअल नहीं, स्कूल लड़कन में डिसिप्लिन नहीं है, पेरेंट्स यहाँ 5-5, 6-6 लड़कन रखी से, और एक घर में जावे. हमें इला सवाल एक बहुत एक पेशेंट करी सलाम से, बोले आप हमें बताओ, बोले हम लड़कन स्कूल में मेहनत करके रात दिन पढ़े, और कोई स्कूल में खाली फन करके चल रहे, पढ़े भी नहीं, उसके भी 200 मिले, वहां भी लड़का 200 मिले. आप बताओ इसमें कौन सी फेयरनेस है? समझता है फेयरनेस नहीं है. क्योंकि शेया की लड़कन कितना मेहनत करे स्कूल में, या लड़कन कितना पंचुअल है स्कूल में. हम रिमेंबर करता 2023 में बा प्रोविंशियल के जो शेया रहा, वो बताए 21,000 जो बा प्रोविंस ड्रॉप आउट रहा. तो 21,000 टाइम्स $180 वट एवर करो इज $4.2 मिलियन. और फिर अभी आप जाके प्रिजन में भी देखो कितना ये जो फ्री स्कूल सिस्टम से वहां प्रिजन में बैठा है, जितना लेबा मांगे में अंदर प्रिजन में है. तो ये सब फैक्टर्स मांगो, देखो कि हम लोग जो फ्रीबीज लाया है अभी, आर वी गेटिंग द आउटकम? वो पैसा गवर्नमेंट उतना एजुकेशन में देवे, बट उसके आउटकम है कि नहीं? लड़कन वो रकम से पढ़ के निकल के मेहनत करके काम धंधा करे, कि जेल जावे, कि ड्रग्स में जावे, सेंजाल जावे, लॉट ऑफ इश्यूज आर देयर. और फिर अब कब तक एक ग्रुप काम करी, मेहनत करी, और फिर पैसा जो बरावे वो सब बगल चल दे, तो एक ग्रुप के ऊपर बहुत हार्ड हो दीजिए ना, जो बोलता कि हिंदुस्तान के ऊपर बहुत हार्ड पड़ी. अब हम लोग लीज के पैसा भरो, हम लोग एक चीज भरो. यहाँ आप देखा हुई कि अभी एवरी गवर्नमेंट के नीचे मिशन आए तो किसके बहुत भारी ग्रांट है, 120-130 मिलियन उन लोग के मिले, ग्रांट मिले, लीज मनी और ये सब चीज मिले. तो वो लोग एक वैसे बहुत एडवांटेज साइड चल रहे, और हम लोग के पीपल बहुत बहुत डिसएडवांटेज चल रहे. तो वही चीज हम भी कोई बात इलेक्शन जाता, बट आई टॉक ऑन फेयरनेस में बात करो कि एक पेशेंट जो मेहनत करे, एक जो मजबूरी है और एक जो मजबूर है, तो हम लोग किसके मदद करता है? ऐसे नहीं कि कोई के घरे बैठा रहे, वे काम धंधा करे नहीं, घरे कुछ बोए भी नहीं, खाली वेट करे कि गवर्नमेंट के $200 पैसा मिल जाए, वो पैसा में बस तो वो चीज हम लोग एज एन नेशन हम लोग आगे नहीं बढ़ेगा. तो आप जैसे हम बोलता, आप समझता ना कि एजुकेशन में राइट जगह पे हम लोग इन्वेस्ट नहीं करता है.
अभी एजुकेशन के जो हम और एक बोलता है जो नहीं फ्रीबीज रहा, अगर अच्छे से देखो अभी हम लोग के मेडिकल साइड भी काफ़ी इश्यूज है। इंश्योरेंस कंपनी लोग पैसा भरे फॉरन ना ट्रीटमेंट के, अगर सब इंश्योरेंस कंपनी मिल के मशीन्स यहाँ लाए इधर हम लोग एक आध एक्सपेक्टेड के बुलाए के अपन डॉक्टर्स लोग के ये एजुकेशन सपोर्ट करके जाए के 6 years इंडिया या बड़ा बड़ा कंट्री में अपन सीनियर डॉक्टर सर्जन लोग के अगर भेजा पड़े के लौट के उन लोगों के सेव करिए न्यूरो सर्जन कार्डियोलॉजिस्ट कौन चीज हम लोग अपन हेल्थ सिस्टम भी आगे लाएगा। तो वही चीज हम लोग फ्रीबीज कहाँ यूज करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर फ्री पेंशन देखो, फ्री फेयर देखो, गवर्नमेंट लास्ट गवर्नमेंट अभी हम डायलॉग फिजी में हम फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर एस सईद क्यूम के सुना, बोले वी हैव लॉस्ट लॉट ऑफ मनी बिकॉज वी डोंट हैव अ नेशनल आईडी जो चीज डायलॉग फिजी में अपने आप बताई से कि हम लोग सरकार भी उन लोग के जो टाइम बहुत भारी पैसा उन लोग के वेस्टेज में बिकॉज नेशनल आईडी नहीं बनी सरा, तो लोग के पता नहीं लगे कि मदद कहाँ जाए कहाँ नहीं। कोई पेरेंट्स लोग पेंशन लेके बैठी से, हेवी रिटायरमेंट लेके बैठी से, कोई लड़कन लोगन सिविल सर्वेंट है, कोई लड़कन ओवरसीज में उन लोग के फैमिली बैकग्राउंड सब चीज अच्छा है, बट स्टिल उन लोग अप्लाई करे बिकॉज 60-65 में क्वालिफाई जाए। तो वही चीज है कि हम लोग ये पैसा बढ़ता है, बट वो पैसा के रिटर्न्स कौन सी है कि खाली हम लोग बढ़ता है, अगर एजुकेशन में बढ़ता है उसके रिटर्न कौन सी है, अगर हम लोग के क्वालिटी वर्कर्स मिले या हम लोग 500 पैदा करे में दे दिया तो पैदा होते जावे लड़कन, कोई कंट्रोल नहीं हुए, फैमिली प्लानिंग नहीं हुए। तो यही सब चीज हम के फ्रीबीज के लेके वी हैव टू बी वेरी क्रिटिकल माइंडसेट रखे पड़ी कि आर वी थ्रोइंग गुड मनी ऑन बैड मनी, दैट इज द क्वेश्चन। बिकॉज जोन ट्रेंड से भी फिजी जावे हम लोग एको बजट जीडीपी बैलेंस बजट नहीं देखता है। एवरी ईयर हम लोग लगे वी आर 800 million और 1 billion 1.2 billion डिफिसिट देखता है। So we have to look at all this operating expense, be it freebie culture, चाहे गवर्नमेंट के सैलरीज रहे, चाहे अलाउंस रहे, जो नहीं we have seen from last government और अभी गवर्नमेंट में जो नहीं लैंड क्रूजर्स है, जो कौन सी एस्कॉर्ट व्हीकल लोग ने, ये सब चीज इज वेरी हाई कॉस्ट। आज हम फिजोटा से लौटत रहा मीटिंग से हम देखते हैं 300 सीरीज लैंड क्रूजर गवर्नमेंट वाला एक दूसरे के संग एंड दैट $600,000। पहले अगर आप लोग देखो कोई भी सरकार चाहे इंडिपेंडेंट के बाद से हम लोग घर से गवर्नमेंट तक जाओ, हार्डली हम लोग के वो रकम के व्हीकल लोग रास्ता में दिखाते रहा। अभी तो हम लोग लेटेस्ट जो $300,000 के व्हीकल लोग ने, एस्कॉर्ट व्हीकल लोन वो सब हम लोग देखते हैं। दिस इज ऑल अननेसेसरी एक्सपेंस, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ फ्रीबीज कि हम लोग बहुत एक्स्ट्रा ये कल्चर लाई दिया है। Freebies for government ministers, freebies for people, freebies to student जो मेहनत नहीं करे। We have to cut this culture. Freebie culture मांगे काटे, जो मजबूर है मदद करो, सरकार के काम है, जो के तकलीफ है, जो के लड़कन मेहनत करे, जो फैमिली में इश्यूज है उन लोगों की हेल्प करो हम लोग। बट और जो के कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, जो चाहे स्कूल में चाहे अपन कमेटी में जो बड़ा बड़ा जमीन उसके नाम पे पड़ती करके रखी से क्या उन के पैसा दो। अगर पीपल के इनपुट रही इट विल ब्रिंग लॉट ऑफ मनी टू आवर इकोनॉमी। आप ओवरसीज में अगर देखो कनाडा या काफी जगह वहां पे उन्होंने एक ऊ रखी से, जैसे हम लोग FNPF कटे, उन लोग के भी डोल और वटेवा सब चीज कटे, राइट, उन लोग भी पैसा मिले, पीपल के सेविंग्स देखे, ईयर ऑफ सेविंग्स, वो रकम से फिर लोगों के रिटायरमेंट में पैसा मिले। हम लोग के यहाँ फिजी में कोई रकम के रिक्वायरमेंट है ही नहीं रहा। तुम स्कूल चाहे साल में 80% जाओ, चाहे 20% जाओ, चाहे 100%, तुम्हें वाला ग्रांट मिली। तुम स्कूल में चाहे सस्पेंड हो, चाहे स्कूल जा भी नहीं करो, फिर स्टार्टिंग में तुम पैसा ले लो, तो देयर इज नो कंट्रोल। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस 200 स्मॉल, हम लोग सोचता है 200 स्मॉल मनी है, अभी रास्ता में अगर जाए $20 गिरा सब मांगी उठाए, बट हम लोग जो लड़कन की $200 कभी तुम देखो रास्ता हम लोग चली स्कूल नहीं जावे, दिस आर $200 दैट इज इट्स डाउन देयर। बट ओनली थिंग हम लोग रियल डॉलर्स देखता नहीं, तो हम लोग जाना है नहीं। बट इकोनॉमिक साइड से देखो, जो पीपल फिजी के इकोनॉमिक समझे, वो लोग जाने कि फिजी के ओवरहेड बहुत ज्यादा है। तो ये मतलब फ्रीबीज के बतावे कि गवर्नमेंट हैव टू रीथिंक, रीडिसाइड। अगर नेशनल आईडी बनाए के तो बनाओ, और एडवाइजरी काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जोन भी है, वी
throw our good money for good money, not throw the good money on bad money, because we need to control our national expense. Before we get back into it, let me tell you about something that's making life easier for a lot of Fijians right now. It's called Rover, Fiji's first homegrown ride booking app. We've all been there, whether it's finishing a late shift, leaving after a late Talanoa session at night, or trying to catch a ride during peak hours when every taxi feels impossible. Well, Rover solves exactly that. Open the app, request a ride, and you see your fare upfront before you book. Every driver is verified and licensed, and you can track your ride in real time from pickup to drop-off. Whether it's at work, the airport, or just trying to get home safely, Rover makes it simple. I believe this solution is built for the Fijian context, and you can download Rover on the App Store or on Google Play. Download now and book your first ride today. So, Mr. Gounder, what do you make of the current political landscape? As a businessman and an aspiring politician, what do you see on the ground? Do you think Fiji is in a good place? What's your view on it? Good question, I will say, and different people have different, prospect, different belief. Myself as a businessman and someone from a small town in Tavua, also from the farming background, I see there's a lot of things that is needed, and I think all the promises that were made pre-election and looking at the development, the progress, and looking at some of the decisions that were made, I don't see very promising. It's something that is making us worry. People from the grassroots, people from the corporate side, and like everyone, I've been meeting a lot of people recently, people from all different communities. They all have mixed feeling, and people are worried, people are confused, and investors are not having that confidence to invest, and small farmers are like looking at the safety security for their livestock. So there's as I said, a lot of things are involved. People are afraid, people are confused, and people are not able to come together to to bring the required changes. I think people are very much now trying to stay away from all these political dramas that are happening. So I think that where I'm coming from is that Fiji needs a new set of leaders. Mm. And looking at the current political system, it's not very promising. Speaking of political dramas, you have been before NextGen, as you mentioned earlier, you have been in Unity Fiji. And so I want to ask you, what happened there? Why did you leave Unity Fiji? I want to be very honest, and I got a lot of friends in Unity Fiji, and I have a close relationship with them. I respect them, but what is truth? You have to be always, go with the truth. With Unity Fiji, as I said, when my political career I started back in Tavua in 2024. Before 2024, I was someone who was very reserved from politics. I was one of those who were not anyway interested in politics. As I said, I don't have any political connection. None of my family members came from political background, or my close friends or relatives. So I was someone very reserved. But when I came to understand about some of the national issues and corporate issues, social and grassroots issues, and when I was approached in one of the meetings for the netball to revive in Tavua, it happened in Tavua village. So
I was introduced to Unity Fiji as my first political party because my friends, since we are from Ba province, and we have late Madam Andi Seviagoro also from Ba province. So I was convinced to join Unity Fiji. And one of my goals was, as also said you previously in my Hindi interview, is that I want to work towards unity. I want to show people, that this political brought a lot of differences in understanding and, in common terms. So as an Indo-Fijian, I always wanted to join Aituki party. I wanted to join Aituki party to give confidence to the indigenous people that the Indo-Fijian can come and, walk the way they want and keep himself balanced for the both communities, and to bring respect on behalf of Indo-Fijian communities to our landowners. So in that way, I was taken to Unity Fiji. I went to Unity Fiji. I met the party leader. I met everyone. Actually, I didn't meet the party leader on the very first time. I met Madam Adi Seviagoro and late GS Mr. Mosese. They were very humble people, and I was welcomed by them, and they listened to me, and they were very excited to see an Indo-Fijian who is very much surrounded by Aitokis, who is very linked with Aitoki culture, tradition, who has been very much respected by the indigenous people, in different towns and districts and province. So very moment they said, I'm welcome. And, I'm a Tavwa kid, and the first AGM of Unity Fiji happened in Tavwa. And that time I met party leader, and, we had a big crowd in Tavwa. And Unity Fiji had a AGM. In that AGM, they were looking for some board members because they were short of board members. So they wanted to have one Indo-Fijian in the board, and, Ratuman and some others. So 4 of us were, our names were picked in the election. People have, picked our name to be in the board. And after a few months, I got a reply from General Secretary. I got email, all the records are here, for my CV to be given, for me to be, me and Sister Noling Billings and some others, to be the board member of Unity Fiji. So I was working, on the requirements, and that time, the 2-time candidate, Big Dan of Daratambu Nendi, he passed away. I have a lot of respect for this person. I want to talk about this guy. This guy was, Big Dan was from Daratambu Nendi, where his own chief, I think his name is Meli. He stands for PEP. But he stands for Unity Fiji for 2 years. I think he paid 10,000, if you require a political ticket, you have to pay a 10,000 sub. So he did that. So when he passed away, there were a lot of email exchange, and I was told a lot about Mr. Narube. He's working as a Fiji's Reserve Bank's governor, and the other areas he have worked, and the experience he carries, the wealth he carries, So I was looking forward to for that funeral, that all the members SP email will take a very good rengu. What are all the traditional things that supposed to go in rengu, like I do in Tavwa. If I take rengu to a lot of funerals, because as I said, I have a lot of connection with the indigenous people. So when we went, like myself from Tavwa, I came along Matatikina, and about 7 or 8 of us, youths, female, male, we came. And I was expecting a big crowd from Unity, the youths, male, female, party president, party leader, other executive board members. And sadly, there was none. Only the late GS was there. And with them, 2 ordinary members came. No board members, no party leader, party president. And the things that were discussed, the traditional things that we take, like, met, tambua, tanua, all those, bags of chicken, whatever, to the rengu. I took grog myself. I took the grog and an envelope of cash from my side. So I went there. I did ask GS, and he was not able to give me an answer. And I asked for other members. They were not there.
So we went there to that funeral, and I easily get, my interaction easily goes with the indigenous people. So I remember I was standing at maybe two of the former PKNs, I remember from that village, Kirtione Talinga or Vatamo Ravovo. One of their residents was, I think Big Den. So I was standing there. So they asked me, because I was the only, there were only two Indo-Fijian that day. One, someone came to sell the beans and peanuts to that funeral, and I was the only Indo-Fijian in that village to attend that funeral. So the people were, excited to know about me. They asked me. Then I told who I am. So they raised their concern. See, this guy was a very honest and a very good guy, Big Dan, and he was standing against even his chief from this village to be, one of the candidates for Unity Fiji. Now, since he passed away, the actual respect is not there. The proper Rengurangu is not there. The senior members of Unity is not here. So, brother, you being an Indo-Fijian, how are you going to look about this party? What respect you expecting from these people? So that question, went in my mind, and still it was going around, in my mind. And I was asking myself the questions, what these people have, I still got a number of these people from Daratambu, the indigenous people. And they asked about my background, where I am from. I told them the involvement of myself in, I took affairs, and they said, we people of Nandi, we need someone like you, to come and consult us. So I was very much with those people, and things were going in my mind after funeral when we came. And what surprised me, my 7 people that went with me, they all were indigenous people. They told me one thing, they called me say, my staffs and my friends, they called me say, are you sure you want to stand with this party? I said, why? He said, these people see they are not respecting their own member who have been there for long. What do you expect from them? You need to rethink. So I came back and I discussed with my family, with my committee, the indigenous committee in Tabwa. I told my frustration. They said, yeah, that is not right. You need to make a move. Then from there, I left them. Do you think Mr. Narube, and you don't have to get personal or anything, but do you think he's fit to be a leader? See, one thing, for leader, I mean, what Fiji now need is a leader who is able to bring everyone together. Not like, only in economic terms. There are a lot of things we need our national leader to address. I mean, I want any politician, what they promise to people to achieve. Not for only winning election or winning votes, you try to, make up things. So I will just go on few of his, things which I heard, which questioned me, because end of the day, it's not that I'm a politician. I'm also a public. I'm also a corporate person who wants to see, leaders who can bring real changes. If you look Mr. Narube's statement in 2009, I mean, there are a lot of things we can talk about Mr. Kayum. There can be a lot of disagreement about him. There can be a lot of reforms he have done. We can question about it. But at the same time, there were a lot of good things done by him too. Or any leader, be it any leader. I'm not saying only by him, by any leader, any government. I don't want to degrade or defame anyone, but going to Mr. Narube's 2009 statement, he have said that I was forced to resign because I didn't want to agree to the devaluation of Fijian dollars. Remember, when you look at 2009, we were having a crisis, economical crisis. There were 3 major crises that was there. What was foreign reserve? One was foreign reserve, trade imbalance, and global financial crisis. Our agriculture sector was really going down. We really wanted something to revive Fiji economy. And I think what Mr. Kayum did in 2009,
by doing the devaluation, he was able to promote the tourism industry of Fiji, the aviation industry. I mean, today, if you look at tourism and aviation is the backbone of Fiji, no doubt. So he was the creator in 2009 to bring the tourism industry up. You look at our aviation industry now, you look at our aeroplane, it is best in Pacific now. Even Australia and New Zealand is not able to compete with our national, carrier. We are, going countries like Canada, Dubai, Singapore. Now flights are going to Gold Coast. So if I look at the statement of Mr. Narube, that in 2009 he didn't wanted to agree with that devaluation. If he would have stayed with that, and the former finance minister Kayum and others would have stayed with that, we would have never able to bring where our tourism is today. Because you can give so many reasons why our agriculture collapsed, but bringing up tourism have helped Fiji. So that area have given me some doubt on him. That's number one. And number two, recently, I was sharing this with the current PM. Pre-election, a lot of people talk about, mining X, land X, all this. I've seen mostly the Aitoki leaders. They start to talk about this mining X, land X, all this X, right? One thing we need to understand is there's a lot of MOU that have been signed with investors. There are a lot of legislation, a lot of X, a lot of things are from ages, that are in place. You cannot overnight change it. So if any politician comes, tells us, oh, we'll win the election, we'll change all this. I was in Tavwa when this media forum was going. The landowners questioned direct to the current PM, Onasitifine Rambuka. They asked him that pre-election you made these promises. Can you change this? He personally said, I cannot change. There are a lot of legislation, there's a lot of rules, laws that are there. I can't change. You look at like before election, people were even telling we're going to change the 2013 constitution. We'll change the 2013 constitution. But in real, it's a fourth year going. We are still not able to change it. So just to win the election, we have seen leaders are fooling people. I showed recently, they said they want to change the 2013 constitution. I remember when I joined them back in 2024, they are talking from that time that we're going to file this thing in court. Till that, they haven't done anything. Now coming election, you start talking about that. They are talking about that we're going to pay $1.2 billion. There's 240,000 each to 0.48% veteran. I met some of the ex-military officers. They said, brother, we have a lot of respect for you. But one thing we just want to ask you, we have seen in Unity Fiji, they are giving a promise, you must have also seen in media, that the ex-military, the military that are fighting for the peace thing in the court, they said if Unity will win, they will give $240,000 each. I said that 240,000 is 1.2 billion they are talking about. We are having the crisis, economic crisis. Where are they going to bring this 1.2 billion? So they said what we should do. I said, okay, you get a declaration from them that okay, if we vote, you win, you pay us this 1.2 billion. Get it signed. Get agreement. That's the problem. That's why I've seen. Even I have seen them recently. They say, oh, we got an investor waiting. They are just waiting. If we're gonna make it, then they will bring the investor. I mean, look at us. We are concerned people of Fiji. As I said in one of my interviews, if you remember the Hindi one we did, I told PM I don't want to wait for next election. I want to get connected to the government so that we people of Tavwa can be, helped. So if a leader says we'll only bring the investor when we win, is something to doubt with. As a genuine person, as if you got a heart for your nation, you won't gonna wait for election. You will bring the help, instant to help your economy. These are some of the things which have really make me doubt. I'm not going against the party because they are some of my friends there. They are different individual, but I'm talking about the leadership as per your question. That these are few areas,
Not only him, most of the leaders. I think if you're going to ask me about other leaders, I'll be giving my view on them, what I think. What Fiji needs now is not that I'm an Indo-Fijian and I go and sit in the Indo-Fijian committee and start talking about the temple and I start talking about sugarcane just to get the Indo-Fijian vote. Or if I'm an Aituki, I just go and have an Aituki dialogue in Aituki committee to get the Aituki votes. No, we don't want that kind of leader. We want national leaders whose concern is for everyone, not a particular group of people. Fiji doesn't want a race-based leaders. Fiji want national leaders. That's where we in NextGen Alliance, we have people of that caliber who comes from all background, all province, be Indo-Fijian, be Aituki, be Ratuman, be European, be Rambi. NextGen Alliance, our party got all group of people. We got a balance of male, balance of female. We got 80% of youths. Most of our members, people like Mr. Bismode, people like Mr. Leslie Vanubau, Mr. Frederick, these people are highly educated, have been working in civil servant. And you look at their habits, some of the habits they have worked in the grassroots, they have done the social work, the groundwork from years compared to Mr. Narube. You ask Bismode, whole of Fiji, 80% of people knows him because the areas he have covered. You look at Leslie Vanubau, Mr. Leslie Vanubau, you look at Mr. Frederick, all the Pacific Island, he knows him. These people have done master's degrees and are still humble people. Those kind of leaders, where we all sit together with a common goal. That is national interest. We respect each other's culture, we respect each other's religion, we respect the areas that are reserved for particular, group of people, we respect. But when it comes to leadership, we look at it as a national interest. We don't want to go and make all those promises like other leaders. Talk about, the dispute that is there, the issues that is there, to put more fire on that, to bring other government down, to bring other politician down. No, it's not that. To be a politician is not easy. It's not easy to be a politician. It's not easy. We have seen now people are getting smart. They understand the politics side of things. And then there are people who use you. I've been receiving calls from so many people. Someone is sick in my family. We got this issue. We got this issue, because they know we are going in politics. They think that we are desperate. They will say, "Oh, this one is sick. This one is sick. Can you help?" Because they know by doing, they believe that we will. But as I said in the beginning, I have no fear to lose. I have no fear to lose. I will be straight. I'll be an honest leader. I've been sitting with thousands of Aitukis and I've been telling them on a real thing that it's time for you people to take the ownership. It's time for you people to decide about your family. It's time for you people to, give your resources for development, for investment. We all together can move, We have to, contribute, each and every one of. We have to take responsibility. If we are more in our tradition, more in our culture, more in our religion, what are we achieving? Sadly, I was sitting with a group of indigenous people, some Turangni Koros and some prominent indigenous people. They took me back to the time when the CR, the colonial sugar refining companies were there. That time the least money not all money were given to landowners. Some portion of the money were kept. You go to Tava village, you'll see a line of concrete houses. So what the colonial people were doing, they were saving the money to build their houses for the landowners. Then after that, there was 20% of the money goes to the village development plans. You see, every government, you like it, you don't like it, every government have a lot of scheme for the indigenous people. Under Ministry of Aituki Affairs, job for nature, there's a lot of help for indigenous people. Like 1/3 you give, then 2/3 government gives, there's taxi payment, VT mini payments, there's like micro businesses, all small business. There are a lot of things are there to grab. But the money is not there. The money is not there.
And I have seen, I did research, I'm not against any race and religion, but I have seen the amount of time they spend in solis, to buy a luxury vehicle for Tala Tala, 100,000 worth of vehicle for Tala Tala, build an expensive house for conference. The money is going there. And during that soli, you see the kids, and not only them, others too. How we are balancing ourselves. And it becomes a national leader, any politician that want to go in politics, first to become a person, who have experienced that lifestyle. Then you will understand. Not, the problem in Fiji, what I have seen is over the years, the election format that have changed from the 1997 constitution to 2013 constitution. What is happening now? You will see, before we had a district representative from all district. So people don't have to lie. See, like if I'm standing from Tavua, I know I need support from Tavua people. So when I'm going to stand, the people of Tavua should see my contribution over the time I have done in Tavua in various sectors. So I don't have to lie. I don't have to make fake promises. I don't have to, get attraction from all over Fiji. Because end of the day, I know I have to concentrate on my district. That's why NextGen Alliance, what they are doing, they are having members from all province, all district. You may be from Monosavu, you may be from Kandavu, you may be from Lau, Wanambalabu, Ratuma, Tavini, Reki, Tavua, Ba, Nitasiri province, any province, will have someone from there who have built the reputation, not 1 year, 2 year, or 5 year, maybe 10, 15, 20 years, who are qualified, experienced, have lived the grassroots life. We don't want to be like the last government in current government, where you promote one of your leader, and your leader gets like 100, 200,000 votes, and rest of, just from your family members get 200-300 votes, and you are there. So what the 200-300 votes shows you? That your own people from your own district have not supported, your own members have not supported you. So what NextGen Alliance is concentrating is to get people who have already dated their hand, who have sacrificed for the people, to be the people's leader. So that's a big difference between us and the person you have questioned. Mm-hmm. I interviewed him last week, by the way. Just that question on experience and then youth as well. How do you balance that? Looking at, you mentioned how some people have 15, 20 years experience and they're qualified to be in that position. But at the same time, I'm guessing you also want to promote youth leaders as well. How do you find that balance? Because someone who's 20 years old, it's impossible for them to have 15 years of experience. As we said, that 80% of our youths, like when we say youths, it's not only the age that we are looking at. Like, look at me, I'm 43, but still I feel like I'm a very part of the youth, and same, we have people age 35, 38, 34. But if you look at like the age requirement, that like we look for youths are like 35, right? But what we have seen is the energy, the physical ability to be like, still believe that you are very part of that youth, you belong to that youth group. So what we mean by youth for our party is we are going to that people who are experienced not only with with number of years, but with closer to our youth age, like maybe like early 40s. We are targeting all them to work under our youth, the 80% that we require. So there we have people of 20 to 15 years or 20 years experience. So we are targeting somewhere, youths from 18 to 40 years. It might be like we have like 60 or 70% from 30 to 40 years. And then like maybe 5%, we take early 20s or, late 20s. So that's what when we're going to be doing the selection of our candidates, all those factors will be looked at. The qualification, the
the 20 ministries that are there, the people like if the backgrounds, if we want to fulfill the background of health, then we'll see the qualification, the medical qualification experience that person carries to that health sector. So same we will be working the 20 ministries we got. We'll have people with that experience, with that qualification. Yeah, if some youths are like like above 35, they are somewhere 39, 40 or 41, 42 till 45, we will class them in our youth group. So we have, what we have done, like our understanding between us board is that we're gonna focus till 45. We'll look people till age of 45 as very much as youth. What are your thoughts on the previous administration? They accumulated approximately 42% of votes in the last election, and I'm guessing they still have quite a large number of people who still support their party, and what was their party. Much recently, I believe Benny Marama has endorsed One Nation party, and that's a lot of people are claiming that's the second coming of FijiFirst. What were your thoughts on how they administered? Was it good or was it draconian, as a lot of people say? What's your thoughts on that? When you look at any government, like end of the day, not every government can please everyone. That is general understanding, right? There's two sides of things. One is like on the economical growth of your country, right? That is one side of things, and then the other side is the common thing that we are looking at is the long-term effect of any decision that were taken. That is like social side of things, So economical and social side of things we look at. So as I said, if you look at the economical side of things, I have seen there were a lot of shortfalls. They did some very good work. No doubt about them. As I said, I've already talked about their tourism and aviation side. Heads off to them. That have really helped us as the nation. And then they were able to, build some roads and bridges and, water supply, electrical supply to interiors, the people who've been long, from ages, who were not able to have proper access, road access, water access, electricity. So that area they have done a good work. But in general, I don't see some of the reform they have done have given us a very long-term issues. Like education reform, as I already said, that reform they have done is really taken Fiji backward. What I see, there are few things they have done, they have taken us well ahead compared to anyone. And there are few things they have done that have taken back, we're passing back to even before the independence, I will say. That is education reform. As I said, the education reform they have done, it was not right. We are not able to get skilled workers. Students are getting free ride till Form 6, age of 18, then apply TELS. So where we have before, like, 90s and 2000 products where we have seen parents, if the kids were not doing good in academic, they were withdrawn from the school and were sent to all this technical side of, we need 80% blue collar job. So if you look at, as I said, every 5 years we are losing $1 billion to get 10 to 15,000 foreign workers to work on Fiji. It is not only because of migration. If migration was that and we have reduced the number of youths in our national population, no, we got youths. The population is there, but we are short of skilled workers. We are not able, like before, we used to have apprenticeship, Montfort Boys Town, vocational, parents, take kids out from school at age of 15. When they were not doing good in, academic works, they were sent in to mechanical, carpentry, joinery,
welding, baba, a dresser, chef, farming, driving. So we had that, youths getting experience. So I think that reform they did, they gave the 10-year lapse. And the 10-year lapse is creating big problem in our labor market. We are not able to get quality workers now. Even the education system, they have the children goes to school because the parents know they don't have to worry if the kids pass or fail, they will go till Form 6. They don't have to worry they're not paying fares or fees. So everything is like, it's a free ride. And free ride product, is not the final product is not always a good product, I will say. So that area gave me concern. In the second area was the GCC. I think GCC needed a good way. It should have been restructured nicely. Because I've been meeting a lot of chiefs now, a lot of Toranikoros, a lot of people, and I've been following the number of cases we have with HIV, number of patients at St. Jal, number of, the inmates in prisons. So I've seen, the percentage. We talk about 90 to 94% are our indigenous people. So from the time I have joined politics, I tried to go and talk to these traditional leaders. It's not I'm waiting that I become a minister, I become a leader, then I go and start solving this problem. As I said, we are doing a lot of study. We go like 2 a.m., 3 a.m. We read constitution, we read the bylaws of Fiji, acts of Fiji. We do research on all the coups, we research on, all the political parties. We prepare ourselves. We go and meet the traditional leaders, religious leaders to find the solution. So when I was with these chiefs, I was asking, see, there's a problem. We see your young school kids, like age of 15, 12, they are roaming after 6, 7, 8, they are roaming in towns. We are getting a lot of HIV cases. They are caught in drugs. They are drinking in town where the tourists are walking, where the, prominent people, workers are walking. They are, in town drunk, they are sleeping. We are seeing people, with the drugs getting naked, sleeping, all this wrong way of doing things. And, sorry to say, I told the chiefs that it's like, I've seen, it's a big number of indigenous people. Then I said, what is the solution? Then they told me, before we had this traditional, village laws, there were village laws. We were able to, work with village laws, like, certain places where tambu, these people cannot move after this time, they can't drink, make noise. The chiefs, when they make a decision, people used to follow. Now, when these things were removed and the human rights things were brought, we are not able to control them. They ask, who are you? So that decision too they have done was not right. And even I look at that freebie culture, that as just recently in Dialogue Fiji, the former Attorney General, Mr. Alhazen said that we have lost big because there was no national ID. So if you didn't have the national ID, why you brought that idea of these freebies? Because our GDP is not that strong that we are having this extra expense. We are giving so much money, even people who are not, physically unfit, or people who are not doing anything in school, or people who got like, a good background, family background, who got the money just because of you are 60 or 65, you apply all the pension or free fares, or you are just because you are going to school, all of they are not going to school, but just for money you go get at, enrollment and you take the money. So all those things, even you look at TELS, TELS was brought, and then voting age was brought to 18 years. That is a big question. What actually, now this current government, I had that they have right of 690 million TELS money. So because of these leaders, past or current leaders, the decision they are making, TELS, someone brings the TELS, help, which is not giving, proper outcome. The proper outcome is the quality labors in Fiji market. We have to get foreign workers. So what's the use of these TELS? And then the second government comes right of the TELS, 690 millions. So these are some of the decisions the governments have taken is affecting us.
So if I look at last government, I think agriculture was very much left by them. Agriculture, and if you hear one of the interview by Mr. Inesino Ratu, he was complaining about the indigenous people. The government is giving them help, but then those people are not taking advantage. That's where we, NextGen Alliance, we want to talk about to preserve culture. That we go back to the communities, we give training how to open the bank account, how to invest in particular business. The follow-up should be there. It's not just for election, any government. We have seen with past and current too. Like as you asked, my experience with past, I have seen a lot of help were given, but not in a right way, with not a proper follow-up. Things were just given just for, I think, votes. In our 11th hour, a lot of things are given. In 11th hour, people talk about land, people talk about sugarcane, people talk about mining X, people talk about land, freehold, all those things. So we have to be very careful. We have to be very careful. And I see last government, again, some places they did some marvelous job, but some of the decision they have taken us far back. If there was one good thing you can say about the current administration, what would it be? Something that they have done right. Vanuatu. And development in Vanuatu. I will say, like I'm coming from Tavua, and I'm trying to represent my Tavua in the national leadership to bring some development, some investment in Tavua. As I said, we are paying a lot through natural resources tax to our GDP. Same as Lambasa, if you look, Vanuatu. It's been years where we have seen this urban drift from Vanuatu to Suva, Nosori. There was a big drift of people. People were leaving Vanuatu. I have been hearing from a lot of people, there's a lot of development in Vanuatu because a lot of ministers are from Vanuatu. But then you ask your question, when Vanuatu was last helped? Now we see there's a lot of development. My producers from Vanuatu. No, I just want to be talking the real things, right? As I said, last government did a lot of good things in tourism aviation and a lot of infrastructure, road and other things, hospital and other things, and they were shortfall. Same thing with this government. They did some places, I know, I've been following them, not in a very, big projects, but in Vidilevu, but I have seen they have done quite good in Vanuatu, where I have seen people returning back to Vanuatu to, feel that there are opportunities in Vanuatu. Even I have seen but one thing you have to respect both government, this government and past government. A lot of things are continuous. It's a continuous of because plans, some plans, like even if we go in the government, we have to continue a lot of things that were planned by FijiFirst government, or a lot of things that are planned by coalition government. We have to carry on. All the good things done by any government. Any new government have to come, they have to carry on the good things they have done. But the only thing they have to do is to go and, readdress some of the reforms that were not done in a right way. What do you think are some of the bad things that they have implemented, or some things that need addressing? Current or past? Current. One thing which I have seen is they have not achieved what they promised us was the municipalities, the urban areas, local election, and the general understanding of the municipalities, what roles they play, in certain districts, in certain areas. We have to have, I was expecting, like if you look at, what government have to do, any government over day, they need to start getting people, out from urban areas too. Because we have seen, even with this current government, people are drifting a lot to urban areas. We need to
start training. We have to have committee projects. We have to, again go and talk to preserve our culture, to bring back those people, are not doing anything in town. Maybe roaming in the streets, at nights, who are just making numbers in these urban areas. So what I was expecting this current government to look on those issues, to get those people back from towns and cities, to go back to village and, start using the resources, or, do development, and get the municipality acts right, have a fair election, and bring whatever changes that is required in towns and cities, like surveillance cameras, and red light areas, solar lights, all those things. I was expecting this government to be fair, because they were talking a lot about this pre-election. And now you look at the municipality election, it's been like maybe 21 years. We haven't seen a municipality election. I remember one of my friends was telling me, if I have to win, I have to really concentrate on urban areas. So at that moment, I didn't realize. But when I realize now that the numbers are in urban areas with a $73 million of areas. So it's like you go and please those people just for vote. So as nation, are we moving forward, or we are just entertaining this corruption? So this thing, I think this current government, they did a promise, they were supposed to do it. But now they're coming with an excuse that they will require 20 or 30, how many millions to have this election. So that is a problem. And I think one community, or one type of community that is always left out, is the maritime communities. Yes. What's your plan on that? Maritime, as I said, if you look at my background, as I said, I have covered a lot of sectors. In my Hindi interview, I said I've covered a lot of sectors, and one was the maritime. And, we get a lot of Facebook feedback from seafarers and others. I think maritime is one area that is really needs, we have to address that. There's a group that is working with our team, and I think that group will be working with all the political parties. They are bringing the proposal. They have already met with us. My deputy party leader, Sister Noli Billings, have already met, and we are in talks with maritime, and they are coming with their proposal. And in our manifesto, it's there. It's written big about maritime. We have, over the years, as I said, we do a lot of studies, we do a lot of research, we do a lot of interviews. You have been seeing people like our party leader Bis Mode, deputy party leader Noling Billings, our board member Bindya Rashni, Frederick. Recently Frederick, you must have seen in Facebook, he was talking about Tavini, the struggle of Tavini farmers. The boats are not going there. So we have covered quite big in these maritime areas. We actually, if you're gonna look at our board, 50% of our board members are from the maritime background. So they all are bringing that experience, the issues that are there. So I think that's why I said this NextGen Alliance Party will be covering every province, every different sectors, all the ministries. We have people there. We have been researching, we are collecting everything daily from news, daily from, from past records. We are highlighting all that. We want to form a government for people, not any particular group of people, for national interests. Fiji can only grow if everyone comes together and work. And as I said, there's a lot of contribution required from our indigenous people. They have to take the ownership. They have to welcome others. Others means us too, Indo-Fijian. They have to have that national pride before us. We have that national pride. No doubt they have to. But we have to act together for the national pride, for the future generation. Let's leave all the differences, the political differences. As I said, you have asked me about the past government and the current government. As I said, they already have given us a foundation. Fiji is very next to Australia and New Zealand. Everyone, they have played their role. Everyone, it's not, we like him, we support him, we don't support him. I'm a South Indian, I will support a South Indian. South Indians are normally, they said they are like supporting Federation Party. I'm telling on air, I have never voted Federation Party in my life. Never.
It's not that I don't like them, but maybe I had interest what other leader was doing. So I don't look things on a race and religion base. So that's what I expect people. When you choose your leaders, first of all, to become a politician, to become, a national, it's not easy. You have to do a lot of sacrifice, a lot of studies, a lot of family time you have to sacrifice. You have to sacrifice your money. You have to go around, you have to do committee projects. There's a lot of things you have to do. By condemning, by degrading any politician, it's not right. Speaking of Federation Party, party leader, Honorable Biman Prasad, when you look at the current economic status of Fiji, and a lot of people are feeling it with the rise of cost of goods, cost of living in general, the fuel crisis. But then you also look at Professor Biman's qualifications. He's a professor in economics. How is it that him, as a professor in economics, how has he not been able to translate it into the current economy? Why is there a disconnect there? I think you mentioned quite a bit about qualifications. In that case, why doesn't it translate? There can be a lot of reasons, but if you look at one reason, I think he was very lucky to have the permanent secretary of Sri Gounder, with Mr. Sri Gounder, with the experience and caliber he have. He have experience from the last government. So I think, I don't know what Mr. Biman have missed out, or where he have put his interest, apart from the economic side of things, where people are picking it. I think he had a very qualified permanent secretary and a team to work with. A very, very trained team to continuous work with. But as I said, you can talk about some reforms, you can talk about some, awareness. But if you are, directly targeting someone, if you want to bring someone down, if you want to, please anyone, you won't be a national leader. That's what I personally feel sometimes. That if you want to be a national leader, first you have to be a listener. You have to go back to people maybe, who have experience, even though they are out from your comfort zone. But you need to go and, I look at even Mr. Main Chaudhary, Mr. Ayah Said Kayum, Mr. Sidiveni Rambuka, or, any politicians, right, over the years who have that experience. I think at time, you when you become a leader, you need to go to these people and go in a good manner. And, ask for support, and whatever happen, put the interest for their nation. That's what I think Mr. Biman missed out. Sometimes, your personal differences shouldn't be, affecting your national relationship, your national leadership. So that's what I feel, but I don't know where he's missing out, or he was not following, things. As I said, you can be a Reserve Bank governor, you can be economics, you can be a lecturer, you can be working for FRs 3 years, you can be a permanent secretary. The national economy covers a lot of areas. One thing is, like which we are ready in doing research is, you must have seen the geopolitical relationship, the international relationship, the investor confidence. The leaders have to carry that caliber. We have seen presidents of India, Prime Minister of India, presidents of China, Foreign Minister of Israel, Prime Minister of Australia, New Zealand, all those big people from Japan, like big diplomatic countries, leaders have came here, big investors have came here. So it becomes the finance minister, the person who is running the finance, to have that, idea, to have that courage, that, confidence on having this international negotiation, international aid, international help, international support, and how you plan. If you are taking loan, what is your repayment plan? Which area you are taking loan, which area you want some diplomatic, geopolitical partners to give aid, in your medical sector. There is a lot of bilateral relationship that is required.
And that's what I've seen last government. They as I said, I'm concerned with some of their shortfalls, some of the reform they did, and which we don't agree. But as far as the bilateral relationship you have seen, they had that qualities to attract those people to come to us, and we discuss on areas to be helped. So I think I haven't seen Mr. Prasad currently having that bilateral dialogues. If you have done, sorry if I have missed out, but in general I think that's the area he have lacked. We have come towards the end of the session, and I ask all of my guests this. So let's say, Mr. Gounder, everything you have done from your childhood, working in a farm, and then later on becoming a salesman, and then into the business world, getting into politics with Unity Fiji, and then leaving that party and getting into NextGen Alliance, helping. After Unity, I was with PEP for a little bit of time. And PEP, or just generally in the politics side, and Taiwan netball team, and let's say everything that you have done till this point that you're sitting across from me, let's say it was all erased and gone, and no one knew who you were. What's one message you would like to leave for someone that were to listen to this? One message I want to give to the people of Fiji is that we all are incomplete, in our life without others' involvement. I want to give an example here. This is a very emotional thing I want to share. One day I was asked by a Aitoki lady, a very old lady. He said to me in Hindi, "Beta, tum log ke Ramnavami kab rahi?" He asked, like, "Son, when will be your Ramnavami festival?" And this lady, she catch crab, right? So I told her, like, next month. Then she shook her head, Then I said, "Auntie, why are you asking me, right? Like, why you ask me this question?" She told me, during that time we have very low sale of crab. Because our main customers are Indo-Fijians. They buy crab from us. When, you see these old ladies, on the roadside, sometimes they go really, they go to late hours, 7, 8, 9. The crabs that they bring, from long distance, from this muddy, all these cuts and everything, they bring this crab on the roadside. They put a price of 120. Sometimes they end up selling it 60 or 70 at 8 or 9. And the money they get, their families back home are waiting for the groceries. That's what most of them, our indigenous people, are, right? They depend on these resources. So she told me that, that week we have to, before that week, we have to save some money for our groceries because Indo-Fijians won't be buying the crab. And then when we have visitors from overseas, Indo-Fijian, they want to eat crab. And the people they know who are selling the crabs on the road are our Aitoki ladies. So you see the relationship. Both of us are incomplete in some way. It is only the political leaders is not trying to work on that unity. That we two major committees, others are there. Like in our party, we had Rambi, we had European Ratuman, they are like our family too. Where I come from, Tava, Watukola, I got a big number of Ratuman, supporters. And, but I'm talking about the differences that is now in this, there is no differences. Political brings but day to day, we have some percentage, but overall, no, I don't see. People during Diwali, during Christmas, everyone enjoys. People, we don't stop anyone here. There are people who talks about all this, but in Fiji, the Eids are, celebrated. Or you see during Eid, our Aitoki people, our, Sanatan Hindu people, they all wear salwar kameez, all those, and they go and, stand with our, during Eid to eat samay, and that. We look at during Diwali, same thing happens. You see our Aitoki lady wearing sari, kameez. Christmas time, we all celebrate company parties, whatever. So it's there. It's there. There is that love.
It's only because of some bad leadership, because of, we are having these differences. So my message is to everyone that we the members of NextGen Alliance, we want to inform every people of Fiji that we all need to work together. We all are together. We all are also incomplete if we, choose certain group of people to bring our growth in our country, to keep things reserved, for our future generation. We all need to come together because, everyone's contribution is needed. There's nothing such as race and religion differences. That shouldn't be there. This is our home, and to all the Indo-Fijians, you'll never find a better place than Fiji. And if you are, having that belief, that, that thought that, about identity, you need to do some homework on things that happening in India and other places where we originated from. So we are very lucky, and I'm very thankful to our landowners, and I'm thankful to each and everyone that not any government, over the years, whoever government, they have given the foundation. We may have some differences. We may not accept what few things they have done, but end of the day, foundation is there. But I also believe Fiji needs a break from all these, senior politicians. They need to have a fresh government, to have a fresh mindset, to start, fresh. Right now, this look at the social media. I think there's a lot of drift due to political parties. Let's all come together, give opportunity to a new party. And, this party, NextGen Alliance Party, is a multiracial party. The founders are Aitokis, Indo-Fijian, Ratuman, Rambis, and Europeans. Don't get confused by word alliance. No alliance, as I said. We went back 1970, where it originated, the word alliance originated from the ideology of later Ratuse Mara was there. Racial integration, cross-cultural coalition, rural development, and protection of indigenous traditional leadership, multilateralism. So, all this positive thing that was back there in 1970, before the coup culture. Before the coup culture, the lifestyle, the belief, the love among the communities where they are. We just have to bring that in our real Western life now. Fiji have came far. Fiji is developed now. We are very next to, Australia and New Zealand. And the way we are going, I think the other Pacific Island countries might not come near to us. And we're going to grow. It's only we all have to come to a common goal. That is nation building. Thank you. Mr. Gounder, it's been a pleasure having you on the show.